Good afternoon, all of you. Happy birthday भी ठीक है. Good afternoon, everybody online. Happy New Year भी ठीक है. Perfect Samba भी. Thank you, Ved Prakash. Happy Holi, Happy Diwali, सब कुछ है ना. All right. Yes. नहीं, अभी तो मैं उनको पुश कर रहा हूँ कि मत अटेंड करो सेमिनार. एक सेमिनार से क्या ही बीतता है दुनिया में. So I'm asking her. No, actually, the challenge is that she's the main speaker, so it's not that easy that she can leave it. But I'm still insistent if she can. So let us see if मैंने साथ में उनको ये भी ऑप्शन दिया है कि हो सके तो 4 बजे आ जाओ या 4:30 बजे आ जाओ. So we'll see. We are trying our best. Even she wants to be here, but professional commitments are professional commitments. उसको नहीं, मुझे एक्चुअली देखो होता क्या है कि कभी कभी मैं बहुत दिखता जैसा भी बहुत इंट्रूडिंग हस्बैंड नहीं हूँ. सो मैं बहुत कम पूछता हूँ किरण से कि तुम्हें कहाँ जाना है, कब जाओगी, क्या करोगी. तो अर्ली मॉर्निंग जब हम लोग बात कर रहे होते हैं तो ही आइडिया ये बात निकल के आती है कि अच्छा, तो मैंने कल सुबह बोला किरण को दैट वी आर प्लानिंग अ फेयरवेल ऑन फ्राइडे एंड इफ यू कुड कम ओवर इट विल बी ग्रेट. तो देन शी टोल्ड मी दैट फ्राइडे आई हैव अ सेमिनार. So things got messed up with that. तो वो ठीक है. नहीं वो we are trying. I hope she can make it. That she'll be here. I'll try my best that she is here. ठीक है, but we'll see. मैं अभी कुछ इसलिए नहीं कह रहा हूँ because I don't know. और मैं भी बहुत जगह पे प्रोफेशनल इश्यूज पे उसकी बात नहीं मानता. So तो मुझे लगता है कि मैं किस हक से बोलूँ कि नहीं अभी तुम्हें चलना ही पड़ेगा. There are many places where if she says we have to go, I say no, this is a professional commitment. ये कर लेते हैं, फिर चलेंगे जहाँ चलना है. तो 30 साल से ये काम करते हुए जीवन में कर्मा तो लौट के आएंगे ही. So it's like that. But don't worry, I'll try that she is here. Even that we'll try. All right, I've invited some people from the office also there because they are the people behind the scene who keep supporting you, keep supporting me. So I think you guys can see them also. I've told B Singh ji also that he's in Rajasthan right now. उनका मेवाड़ यूनिवर्सिटी में वो था एक सेमिनार था, तो वो वहाँ पे है आज. His flight is going to come tomorrow. So he said that if my flight comes on time, then I will surely be there. So I said that, oh yes, if you can come in over even for half an hour, we'll be very happy. So because I would like to see him. I always believe that as youth you should see some dynamic people of our age who have done things their way, who have started from scratch. So I consider B Singh ji as one of those, that he has done things his way and his experience comes very handy when he does things. But anyways, तो चलो आज मुझे तुम्हें 3-4 चीज़ें करवानी है. उसके पहले मैं एक बात तुम्हें बता देता हूँ. मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कल भी मैंने कहा था, बस आज रिपीट कर रहा हूँ फिर से. I am deliberately not at the moment touching certain topics. अगर मुझे लगा कभी भी that those particular topics might become relevant for prelims, I will definitely call you up, get it done at least online for the time being. Then offline of course I can get it done when we meet in May. पर वो मैं करवा दूंगा. बट अभी मैं नहीं कर रहा हूँ. टेस्ट सीरीज के लिए भी नहीं छोड़ूंगा उसे मैं. When I tell you that I'll teach you how to write answers and all between say 30th May and 7th 8th June, then that is the idea that I'll pick up some of those topics and cover it with you. But अभी मैं नहीं कर रहा हूँ because those topics are evolving topics. So I would like to see how they evolve, how they go through, and then we will definitely cover them up. But again I repeat, अगर तुम टेस्ट सीरीज नहीं भी लिख पाओ तो कम से कम उस टेस्ट सीरीज को देख जरूर लोगे. इतना काम जरूर कर लेना, नहीं तो लानत है तुम पे. But I'll just make sure. एक और बात, next week I will keep a Zoom session. I'll keep taking your Zoom sessions, but next week I'm planning 2 Zoom sessions. One for those of you who are appearing 2024. So if you have any query, any preparation thing related, तुम वैसे भी मुझे फ़ोन कर सकते हो, बात कर सकते हो, वो तो goes without saying. But otherwise एक Zoom session करेंगे for people appearing 2024 और एक Zoom session करूँगा मैं for people appearing 2025. So in that case, we will have 2 sessions in which we can discuss how you can go ahead, plan your next 6 months, next 3 months, next 8 months, and do things. Similarly, if you are appearing 25, how you should plan the next 1 year. That we can again discuss so that we are on right track of doing things. All right, तो एक मैं वो plan कर रहा हूँ. Apart from that, every 15-20 days, I will always keep planning Zoom sessions.
इन केस तुम्हें कोई डाउट्स आते रहे इकोनॉमिक्स में, स्पेशली अगर कोई डाउट है, कोई टॉपिक है कवर करना चाहते हो, वो देख लेना। एक बात और तुम्हें बोलूँगा, अभी बहुत तरह के मार्केट में टेस्ट्स आएंगे प्रीलिम्स के, उसमें बहुत सारे आंसर्स गलत आएंगे, तो खुद को बैक करना, एग्जामिनर को नहीं। यू हैव द नॉलेज, you would also know things. Economics की कोई बात है तो मुझसे डिस्कस कर सकते हो, that said this I read, is that correct or not? But I have seen that every year I see it, that many question papers appear and many answer sheets appear, and then many of those answers are not correct. So what happens is it unnecessarily worries you कि मैं पढ़ा हूँ फिर भी मेरे गलत क्यों हो रहे हैं। बट कभी कभी ये हो सकता है कि आपका गलत नहीं हो रहा, वो आंसर गलत दे रखा है। It can be grossly incorrect. So just take care of that, back yourself on that. You have studied things, and May 15th, May 10th के पहले कभी कोई नहीं सोचो कि मैं ये वाला अटेम्प्ट दूं या ना दूं, एज लॉन्ग एज ये हालत ना हो कि भाई आज ही से पढ़ना शुरू करने वाले हो। कि अब अगर यही हालत है कि आज तक सर कुछ नहीं पढ़े, जीएस की कोचिंग अब शुरू करनी है और ऑप्शनल आपके साथ ख़त्म की है, तब तो तुमने खुद ही प्लान किया कि 25 है। लेकिन अगर तुम बेसिक पढ़ चुके हो, परफेक्ट प्रिपरेशन कभी नहीं होगा, हमेशा 50% प्रिपेयर्ड रहोगे, हमेशा किसी एग्जाम में नंबर 50% आ जाएंगे, किसी में 70, किसी में 60, किसी में 30, किसी में 25। Those numbers should not deter you or bother you. Just keep preparing, keep doing things, and it's only around 10th, 15th May, if you are on track and on plan, that you will be in a position to actually judge that how good I am for this attempt. You understand that? उसमें भी last minute jitters होते हैं, जैसे मैरिज के 2 दिन पहले लोग भागते हैं ना, वैसे ही ये लास्ट मिनट जिटर्स हैं कि हमेशा एंड आते आते लगेगा छोड़ ही देता हूँ, अगले साल और तगड़ा प्रिपेयर करके दूंगा। कभी कभी उठपटांग ख्याल आएंगे, मेरा प्रीलिम्स तो हो जाएगा, मेंस लेकिन लगता है मेरा नहीं होगा। बेटा तुम्हारा प्रीलिम्स भी नहीं होगा। ऐसे खुश फहमी में मत रखो खुद को। और अगर प्रीलिम्स हो गया तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में 3 महीने हैं, मोर देन सफिशिएंट होते हैं। 80 दिन में आराम से 1500 घंटे पढ़ लोगे, 1400 घंटे पढ़ लोगे और पूरा सिलेबस कवर कर दोगे। तो खुद को ये सारी चीज़ें फीड करो, उठपटांग बातें मत करना। आसपास लोग होंगे समझाने वाले, हाँ बात तो तू सही कह रहा है, प्रीलिम्स तो फिर भी हो सकता है, मेंस तो लग रहा है इस साल नहीं होगा। नहीं होगा, मेंस देने का एक्सपीरियंस तो होगा, मैं मेंस देने का एक्सपीरियंस ले लूँगा। हैव दैट काइंड ऑफ एन अप्रोच। बट ये सारे ख्याल आएंगे एग्जाम छोड़ने के लिए, ये बहुत ही नॉर्मल है। एक आखिरी बात बोल रहा हूँ और तुम मुझे चाहो तो इग्नोर कर सकते हो इस बात पे, लेकिन अगले 3 महीने में जितने भी फेस्टिवल्स आए, बर्थडे आए, शादियाँ आए, नहीं शादी तो खैर नहीं, लेकिन बाकी चीज़ें बाद में भी आएंगी। थैंक यू फॉर गेटिंग द जोक। तो बाकी चीज़ें बाद में भी आएंगी, तो उनको बाद में कर लेना। होली ऐसा नहीं है कि इसी साल होली है, अगले साल होली नहीं। तुम देखना, हम होली के 2 दिन पहले तक पूरे दृढ़ प्रतिज्ञ रहते हैं, मैं नहीं, मैं तो बैठ के पढ़ूंगा। होली वाले दिन धीरे धीरे निकलते निकलते नाच के चले हैं। ठीक है, तो अगर तुम वही नाचने के मूड में हो तो फिर 25 तारीख की होली है, तुम 12 तारीख 10 तारीख से लेकर 24 तारीख तक इतना पढ़ लो कि तुम 25 को वैसे भी पढ़ने लायक ना रहो। ठीक है, तो वो काम कर लो, दैट इज़ अ गुड वे टू अर्न योर हॉलीडे। बट ये मत करना कि पहले प्लान बनाया, नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, आई विल नॉट हैव अ फेस्टिवल, एंड देन यू हैव अ फेस्टिवल। आई मीन दैट्स, I mean, how long can you behave like Rajat Patidar? So, you should be careful. You should have a backup point for you कि तुम कैसे मैनेज करोगे खुद को। तो वो कर लेना, ये छोटी छोटी चीज़ें, and ups and downs will be regular, so don't worry about that. Don't bother. I again repeat, I will be meeting you starting 30th May odd. We will do a 7-8 class session in which I will train you how to write answers, and while training you how to write answers, I will be covering few things up also with you, so that there is nothing left to chance. The whole idea is that कि कुछ टॉपिक्स अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक अगर सर और करा देते तो अच्छा हो जाता, मेरे मन में भी है कि कुछ चीज़ें और बात करूंगा तुमसे। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, 73rd 74th amendment. So I will talk to you on 73rd 74th amendment post that. Regarding finance commission, I will be conducting a class online for finance commission before prelims, that I can assure you. ऑनलाइन इसलिए कहता हूँ क्योंकि उसके 2 फायदे होते हैं। सभी लोगों को 2 बार वीडियो वॉच और लेटर भी देखने का एस्पेक्ट रहेगा, सो इट्स नॉट नेसेसरी फॉर एवरीबडी टू कम, एंड आई कैन गेट यू डन ऑन थिंग्स विदाउट यू नेसेसरली हैविंग टू चेंज योर शेड्यूल मच। ऑलराइट, दैट इज द ओनली पर्पस, नो अदर थिंग। I am done with, again I will repeat, I am honestly telling you, I am done with what I would ideally like to do with a batch, but then once I reach the ideal, then my greed becomes more. ऐसे ओके, इतना तो कर लिया, इसके आगे और कर लेते हैं, इसके आगे और कर लेते हैं। तो यही बात कह रहा हूँ, मतलब मैं अपनी प्रिपरेशन भी ऐसे ही करता था कॉलेज डेज में। आप लोग, बहुत लोग DU से होंगे, आपको पता होता होगा ये कि रीडिंग्स मिलती है, तो
तो शुरुआत में मैं रीडिंग्स उतनी पढ़ लेता था जितने में मेरे आंसर्स सारे सॉल्व हो जाए, कि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो. सो सपोज 20 में से अगर तुम 10 रीडिंग कर लेते हो तो वो काम हो जाता है, दैट योर आंसर्स इन एग्जाम्स आर ऑल सॉल्व्ड. तो ये कर लेता था मैं एक पॉइंट तक, से दिसंबर तक. हम लोग एनुअल सिस्टम में थे, सो से दिसंबर तक. फिर मैं जनवरी फरवरी में बाकी के 10 रीडिंग भी कर लेता था, ये भी पढ़ लेता हूँ. और मार्च में पूरी 20 रीडिंग रिवाइज कर लेता था. सो व्हेन आई वुड गो टू माय एग्जाम आई हैड नो फियर कि कुछ ऐसा आएगा जो मैं नहीं जानता हूँ. तो ये जो जैसे मैं पढ़ता था वैसे ही मैं पढ़ाता हूँ, कि जितने हद तक कवर कर लें, कि ये फियर दिमाग में ना रहे कि अगर कुछ और आ गया क्या करेंगे, फिर भी कुछ और आ सकता है. द लैंग्वेज कैन बी डिफरेंट. तो टेस्ट सीरीज उसके लिए करेंगे, दैट आपको थोड़े कठिन सवाल दे दें, लैंग्वेज खराब करके दे दें, मार्किंग थोड़ी टफ कर दें, थोड़े कम नंबर लाने की आदत डाल दें, थोड़ा धक्का मार दें कि एग्जाम हॉल में जब 50 नंबर की चीज़ नहीं आ रही होती है तो कहानी कैसे सुनाई जाती है. ये सारा आपको मैं गाइडेंस दे दूंगा ड्यूरिंग द टेस्ट सीरीज. For test series, normally what I plan is you will have 14 tests, again 8 tests and 6 practice tests. So you will have 14 tests in total. For test series, normally what I plan is that you will have 2 classes odd before the test and you will have 2 classes after the test to discuss the test. Alright, so around 3 to 4 classes we will conduct for the first 3-4 tests. पहले 4 टेस्ट जो सेक्शनल है जब हो जाएंगे तो बाकी के टेस्ट के लिए द रेस्ट 4 टेस्ट वी कीप 2 क्लासेस ऑन एन एवरेज, 2 to 2.5 क्लासेस ऑन एन एवरेज फॉर दोज टेस्ट कवरेज. बट जो सेक्शनल टेस्ट है उनको मैं थोड़े डिटेल में करता हूँ कि तुम्हें और चीज़ें समझा सकूँ, और चीज़ें बता सकूँ एंड सो ऑन. ऑलराइट, तो प्रैक्टिस टेस्ट के भी सॉल्यूशन करूँगा मैं तुम्हारे साथ, और जो मेन टेस्ट होंगे उनके भी सॉल्यूशन करूँगा आपके साथ. जो आपको मॉडल आंसर्स दूंगा वो 8 टेस्ट्स के दूंगा. प्रैक्टिस टेस्ट के मॉडल आंसर में नहीं देता हूं क्योंकि मैं एक एक चीज़ खुद ही डिस्कस करता हूं. आप देखेंगे अगर आप अटेंड कर लेंगे मेरी सारी क्लासेस, तुम्हें मॉडल आंसर्स की ज़रूरत नहीं रहेगी, बिकॉज आई राइट एवरीथिंग ऑन द बोर्ड, that what should have been written and how the answer should have been structured. I do that, that is my habit. तो तुम्हें वो भी दिख जाएगा कि अच्छा ये आंसर ऐसे, तो तुम खुद ही लिख सकते हो अपने मॉडल आंसर्स. बट फिर भी तुम्हें मॉडल आंसर में दिलवा देता हूँ that for 8 tests, okay, what could have been the model answer. But otherwise I'll discuss it along with you. For economic services, my discussions will begin from first week April. I will be discussing the tests with you, but they will begin with from first week April, not at the moment. All right, that is one thing. अभी आपकी क्लासेस चलेंगी तो आप पहले क्लासेस कर लीजिए, but I will give you the test discussions videos also. Model test answers you will definitely get. Okay, now we go to what we were discussing yesterday. जब वैभव आए थे तो एक और चीज़ वैभव ने मुझे बताई बाद में, जब हम लोग बात कर रहे थे. उन्होंने कहा that what he was doing in economic services was that he was making sure that the steps are at least done. Like say in econometrics, उनके 74 मार्क्स थे, वो भी आप दिमाग में रखिएगा सब लोग. He had 74 in paper 1 out of 200 and in economic services, and he had 78 in paper 3 out of 200 in this exam, and he's a general category student. उसके बाद भी वो क्वालिफाई किए. उसका मेजर कारण था that he got his paper 2 and paper 4 very nicely done. कहने का मतलब ये है कि जब पेपर टफ आ रहा है तो सभी के लिए आ रहा है. पिछले साल का इकोनॉमिक सर्विसेज का कट ऑफ 585 था, इस साल का इकोनॉमिक सर्विसेज का कट ऑफ 549 था. सिंस द पेपर वाज टफ इट ड्रास्टिकली वेंट डाउन. तो ये कभी नहीं डर, ये यूपीएससी में भी ट्रू है, कभी भी ये नहीं डरना चाहिए कि ये मेरा टारगेट है. अब इस बार प्रीलिम्स का रिजल्ट अब आ जाएगा, आप देखिएगा, बट द कट ऑफ हैज टू कम डाउन बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ पेपर वी गॉट लास्ट टाइम एंड द सीसैट क्रिएटिंग इट्स ओन हैवक दैट इट डिड. तो जब तुम एग्जाम दे रहे हो तो अपना वो दिमाग चलाओ. मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, मैं खुद को हमेशा ये बैक करता था एग्जाम हॉल में कि अगर मुझे नहीं आ रहा तो बाकियों को नहीं आ रहा होगा. अब ये घमंड से नहीं करता था, ये मेरा डिफेंस मैकेनिज्म था. दिस यूज्ड टू बी माय डिफेंस मैकेनिज्म दैट आई यूज्ड टू थिंक अच्छा हम डरते किस बात से हैं, कह रहे मैं तो स्ट्रगल कर रहा हूँ, साथ वाला एक्स्ट्रा शीट भी मांग रहा है. तो वो चीज़ें डराती हैं दैट मे बी आई एम लैकिंग. नो, यू नेवर नो व्हाट द नेक्स्ट पर्सन सिटिंग टू यू इज राइटिंग, व्हाट इज द स्टफ. so don't worry about all that. मेरे एक दोस्त थे, वो आके एग्जाम से बोलते थे मैंने 42 पेजेस लिखा, ग्रेजुएशन डेज में मैंने 44 पेजेस लिखा. फिर जब नंबर आए तो उनको 38, 39 ऐसे नंबर आए थे 100 में. तो मैंने उनसे मजाक किया था कि तुझे एक पेज पे एक नंबर भी नहीं दिया कि तू 40 पेजेस लिख के आया, नंबर 36 दे रहे हैं तुझे. सो पेजेस भरने से काम नहीं चलता, क्या भरोगे वो इंपॉर्टेंट है. सो डोंट वरी अबाउट ऑल दैट, बट बैक योर सेल्फ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नेक्स्ट 3 months, 4 months, 5 months विल बी टीडियस. जो भी लोग अपना अटेम्प्ट दे रहे हो इस साल, वो कोई भी 3 महीने सोच के पढ़ाई नहीं करोगे. इट्स नॉट मार्च अप्रैल मई, इट्स मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर.
Your break is in October, not in May. Feed your brain that. बहुत से बहुत तुम एक इंटरवल ले सकते हो मई में 3-4 दिन का. Come back and start doing things after that. But your exam is not ending in May. Your exam is kind of reaching its conclusion in October, and then about interview and all. अगर prelims नहीं भी होता तो भी October. ऑलरेडी ये हमेशा दिमाग में रखोगे. कल आपको वैभव ने भी वो बात इनडायरेक्टली बोली थी कि यही काम करना ज़रूरी होता है, कि जब तक तुम वो नहीं करोगे, ये सर्कल पूरा नहीं करोगे, तब तक ये एग्ज़ाम तुम्हें नचाता रहेगा. तो इसलिए ज़रूरी है कि कंप्लीट दैट सर्कल. ठीक है, प्रीलिम्स हुआ नहीं हुआ मुझे परवाही नहीं है, मुझे ख़त्म करना है इस एग्ज़ाम की तैयारी को पूरी तरह. सो बाय अक्टूबर आई एम डन. आफ्टर दैट आई एम फ्री. आई डू माई स्टफ, बट कीप इट लाइक दैट इन माइंड. ओके. And preferably you can call me. Preferably you can call me anytime. तो मुझसे टाइम ले सकते हो. But preferably you can call me between 9 to 10 in the evening. Normally I'll be in a better position to take your calls. 9 to 10 in the evening. All right. अब कल हम लोग बात कर रहे थे wind energy की. I think one challenge you had written. Nothing. क्या लिखे थे आखिर? अच्छा वही लिखे थे. ठीक है. So you write first challenge then. Not required, Lipakshi. You can always avoid it. Okay. You write the first one. Very low plant load factor. Very low plant load factor. I'm using this term. Plant load factor. Plant load factor is capacity utilization. So suppose if I have a 100 megawatt capacity, and suppose I am using or producing 40 megawatt, then my plant load factor is 40%. So if I have a 100 megawatt capacity and I'm using 40 megawatt, then my plant load factor is 40%. Okay. What is the challenge of a low plant load factor? The challenge of a low plant load factor is, imagine, if I am not using my capacity well, then in that case I will not generate enough revenue to pay for my maintenance, repair, upgradation. I won't have that money. Do you understand that? It's like if I teach 20 students in this classroom, taking this room on rent. I will have a severe loss. I will have a very low plant load factor in that case. So that is the challenge you see कि हमने electricity sector में अगर कैपेसिटी बना ली है से 1000 मेगावाट की और प्रोड्यूस कर रहे हैं 200 मेगावाट, तो इतना भी प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं कि उससे अपने खर्चे निकाल सकें. ये चैलेंज हमें विंड एनर्जी में देखने को काफ़ी मिलता है. सेकेंड, यू राइट द इक्विपमेंट्स आर रिलेटिवली कॉस्टलियर. The equipments are relatively costlier because they are imported, which makes installation cost relatively high. Which makes installation cost relatively high. Okay, then you write third. I hope you got this point, that you know the windmill and the wind blades and the poles, they are all mostly imported in India, and that makes the installation cost high, and that makes things again a bit more dicey for profitability. And then third, you write, it is seasonal and local in character,
seasonal and local in character, full stop. 73% of wind energy is generated 73% of wind energy is generated during monsoon and transmission possibility for wind energy is very limited. Transmission possibility for wind energy is very limited. Like, we are developing all those batteries and methods to contain energy, but they are still very costly and they're very limited in nature. And 73% of wind energy is during monsoon. But Government of India is developing one aspect on that. What Government of India is doing is that they're developing hybrid wind solar energy plants. That is what is being developed, hybrid wind solar energy plants. So what is this hybrid wind solar energy plant? What they are doing is, see, 73% of wind energy is during monsoon, and that is the time when solar energy is less. So what they are trying to develop is that if we can develop hybrid wind and solar energy, then the time when wind energy is not there, solar energy will compensate. And the time when solar energy is not there, wind energy will compensate. So that is the method that they are trying to achieve. I hope we are clear on that. Put a note below that and write, और एक बात और ध्यान रखिएगा, मैंने कल आपको बता ही दिया था, SECI is responsible for auctioning wind energy also, and IREDA is responsible for financing wind energy projects too. All right, you write within that, to provide more assured electrification, Government of India has planned to develop hybrid solar wind energy plants, with special focus on providing energy security to those regions which do not have grid connectivity. All right, you keep that much about with yourself. That is about wind energy. Then you give a heading, you write challenges of power sector in India. जो electricity की discussion हम कर रहे हैं, overall power sector के challenges क्या हैं इंडिया में? So you write challenges of power sector in India. So see, again when we talk power sector, there are generation companies which are called gencoms. They are the ones who produce power. And then there are transmission companies which are called transcoms. They are the ones which transmit power. And then there are distribution companies which are called discoms, because they are the ones who take the power to consumers. This is the vertical idea of power sector. तो ये power sector ऐसे ही vertically design होता है. Starts with generation companies, then transmission companies, and then distribution companies. All right, Gencom, Transcom, and Discom. So that is how power sector is vertically integrated. All right, Gencoms, Transcoms, and Discoms. This is about power sector that we develop it. All right. Now in India,
generation companies and transmission companies and distribution companies were all fused together till 2003. 2003 तक इनमें कोई फर्क नहीं होता था, सभी कुछ सरकार के अंदर होते थे और सरकार इन सबको कंट्रोल करती थी उस हिसाब से, तो सारा एक साथ ही मिक्स्ड होता था, सब एक साथ ही वर्क करते थे. दिस यूज्ड टू बी द केस टिल 2003. That Gencoms, Transcoms and Discoms, they would be like that. This was, again I repeat, 2003. In 2003, government came up with Central Electricity Regulation Act. In 2003, the government came up with Central Electricity Regulation Act, CERA. जो नोट्स मैंने आपको दिए हैं उनमें ये सारी बातें हैं. कल एक और बात कही वैभव ने, मैं जो आपको नोट्स देता हूँ इस उम्मीद से देता हूँ कि आप पढ़ेंगे. पिछले साल एक सवाल था अबाउट 2009 पॉलिसी ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट डिजाइनिंग इन इंडिया, वो मेरे प्रिंटेड नोट्स में है. अब 2009 की पॉलिसी थी तो मैंने क्लास में नहीं बोला लोगों को, लेकिन अगर प्रिंटेड नोट्स कोई देख लेते तो वो 15 नंबर पिछले साल आया हुआ था. आई मीन मैं इन्वायरमेंटली कॉन्शियस हूँ, इतना पेपर वेस्ट नहीं करूँगा अगर वो यूजलेस होंगे तो देने का पर्पस होता है कि तुम टाइम निकाल के उसे देख लो जब टाइम मिल जाए. जानता हूँ बिजी चलते हो, लेकिन जब भी टाइम मिल जाए उनको देखना चाहिए, बिकॉज दे आर थिंग्स दैट विल गिव यू इनसाइट्स ऑन सम फैक्चुअल्स दैट कम टू योर रेस्क्यू व्हेन यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स. बहुत बार होता है कि हमारे पास एनालिसिस होती है, फैक्ट्स नहीं होते, कभी होता है वर्ड्स नहीं होते. दीज थिंग्स हेल्प यू अ लॉट इन दैट. सो डू मेक श्योर दैट, अगेन आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू डू इट राइट नाउ, बट after the prelims do make sure that you have time to combine them. मैं फिर कहता हूँ बार बार, तुम मेरे नोट्स पढ़ लो और मेरे क्लास नोट्स कर लो, उनको 2 बार कर लो और टेस्ट सीरीज कर लो, फिर वक्त बचे तो कुछ चौथी पांचवी चीज करो. लेकिन जो मैंने दिया अगर वो भी नहीं करोगे और बाकी की चीजों पे ध्यान लगाओगे कि अच्छा ये भी देख लेता हूँ वो भी देख लेता हूँ, तो शॉर्टकट मिस कर रहे हो. फिर जो नोट्स मैंने बनाए कहाँ से बनाए, वही उमा कपिला से चोरी की, योजना से चोरी की, जो मिश्रा एंड पुरी है वहाँ से चोरी की, यही तो किया मैंने. वहाँ से चीज़ें उठाई, उनको एक नोट्स बनाया और बोला अच्छा अगर एक यूपीएससी का स्टूडेंट लिखेगा तो ऐसे लिखना चाहिए, ये फैक्ट्स पता होने चाहिए. सो जस्ट गो बाय दैट, यू नो, दैट इज़ द आइडिया. जो नोट्स मैं आपको देता हूँ माइक्रो में, तो कुछ सियानिस से पिक कर लेता हूँ, कुछ चीज़ें डिफरेंट बुक्स जेल एंड रेनी एंड ऑल से पिक कर लेता हूँ, जो जहाँ अच्छी हैं पिक करके आपको दे देता हूँ. इट्स नेवर अ बुक दैट आई हैव रिटन. I would write better, believe me. You know, that is something that I've given you from UPSC perspective. You know that you do it, and that is, मैं मजाक कर रहा हूँ आपसे, लेकिन सच में ये हुआ मेरे बेटे के साथ. वो इंग्लिश लिखते हैं तो थोड़ी अच्छी लिखते हैं, and I actually appreciate his writing. 10th में है अभी वो, तो उन्होंने कुछ ऐसे लिखा, उनको कम नंबर मिल गए. वो लिखा कोई आर्टिकल लिखा, तो उनके टीचर ने, उन्होंने लिखा था, एक कंपैरिजन किया था, तो उन्होंने लिखा था एज ग्लोइंग एज फ्लेक्स. तो उनके टीचर ने वो लिखा, बोला कि बेटा ऐसे नहीं लिखोगे, नहीं तो सीबीएसई में नंबर नहीं मिलेंगे, तुम्हें लिखना चाहिए एज वाइट एज स्नो. तो अगर वो लिखोगे तो तुम्हें नंबर मिलेंगे. तो बस वही यूपीएससी भी वही चीज़ है. यू कांट राइट एज ग्लोइंग एज फ्लेक्स, यू विल हैव टू राइट एज वाइट एज स्नो. यू विल हैव टू कीप योर लैंग्वेज वेरी सिंपल. इट हैज़ टू बी प्रिसाइज नो डाउट, बट सिंपल. योर पेपर कैन बी करेक्टेड बाई प्रैक्टिकली एनीवन इन दिस country, and we cannot rely on their English prowess. So in that case, it cannot be too heavy on your English. It has to be a normal language, but that normal language should be backed by precision. क्योंकि तुम्हारे word limit होता है, तो precise लिखने की आदत डालो, लेकिन language बिल्कुल normal रखोगे, बहुत heavy language की ज़रूरत ही नहीं है. तो bookish language चलेगी नहीं वहाँ. कहना ये चाह रहा था मैं, that if you write a Freund's language or a Kutsianis's language or a variance language, वो नहीं चल सकती. तुम्हें लैंग्वेज तो एच एल आहूजा वाली ही लानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि करेक्शन उसी की तरह होता है. हाँ, स्टाइल एच एल आहूजा की नहीं लानी. एच एल आहूजा का स्टाइल क्या है, एक पेज पे एक बात लिखो, 2 पेज बाद फिर वही बात लिखो, अगले पेज पे फिर बॉक्स बना के वही बात लिख दो, और उसके अगले पेज पे उसी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर दो, तो सब कुछ कवर हो गया उस पूरे चैप्टर में. यू नो, तो वो तुम पढ़ते हुए कंफ्यूज भी रहोगे कि अजय पिछले पेज पे तो ये कह रहे थे, अगले पेज पे उल्टा कैसे कह रहे हैं, मैथ्स ऐसे अचानक जंप कैसे मार गए, डिस्क्रीट फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे कर दिया, सब कर देते हैं वो. यू नो, उनके बस में सब कुछ है, लेकिन आप बस ये सब गलतियां नहीं करेंगे. बट अदरवाइज आपकी लैंग्वेज सॉफ्ट ही रहनी चाहिए. जिसको भी लगता है मेरी इंग्लिश वीक है और इसीलिए मैं बैकफुट पे हूँ, आप कभी शुभम कुमार जी का कोई भी इंटरव्यू सुन लीजिएगा. वो टॉपर थे यूपीएससी के और उनकी अंग्रेजी काफ़ी कमज़ोर थी. यू नो, तो मतलब वो
बिल्कुल ही वेल वर्स्ड नहीं थे, बट ही टॉप्ड दिस एग्जाम बिकॉज अंग्रेजी का टेस्ट नहीं हो रहा होता, द टेस्ट इज ऑफ व्हाट यू आर एक्सप्रेसिंग। तो ये दिमाग में रखना। बट अगेन आई रिपीट, नोट्स देख लेना अच्छे से, फिर तुम बाकी की भी यार चीज़ें देखो। अगर तुम्हारे पास वक्त है, तुम सब कुछ पढ़ लिख के बिल्कुल तैयार हो, तो सर और भी क्या पढ़े, तो मैं तुम्हें बता दूंगा और भी क्या पढ़ो। बट फर्स्ट थिंग शुड बी दिस, and revision is the key everywhere. None of us are Kalidas who remember thing at one go. कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, आप भी नहीं है, किसी को एक बार में बात याद नहीं होती। जब हम बार बार पढ़ते हैं तब जाकर चीज़ें दिमाग में रहती हैं। ऑलराइट, कीप इट एज दैट इन माइंड। ओके, नाउ we write about the challenges in power sector. You write first, low plant load factor, low plant load factor in many generation companies, low plant load factor in many generation companies due to delay in supply of coal, delay in supply of coal. Again, Coal India Limited becomes a problem there, that coal doesn't get supplied on time. Sometimes the railways don't supply it on time, sometimes the monsoon holds it up. So it can be a mix of many things. All right, but supply of coal gets delayed many times to the power companies, and that results in less utilization of the capacity. Outdated machines, now some machines are 40 years old and still being used in our thermal generation companies. That becomes a challenge. So outdated machines and poor maintenance and repair of the firm. Poor maintenance and repair of the firm. Full stop. In many cases, it is due to lack of timely infusion of capital by the government in DISCOM, in GENCOM. Remember, in 2003, we unbundled the electricity sector. What does that mean, unbundling? Now distinguishing them between DISCOMs, GENCOMs, and TRANSCOMs, and saying all of these will be operated by different companies. Still 90% of electricity sector in India is controlled by government. हमने ये unbundle किया 2003 में, पर अभी भी 90% of electricity sector is controlled by government. 2003 में हमने एक और अच्छा कानून बनाया, उसका नाम रखा Central Electricity Regulation Act. This was formed in 2003. It is a very good law because for the first time now, it started putting responsibility on the companies to earn revenue, generate profit, issue bonds in the market to get money. So it was trying to make the companies professional in character. कि आप सरकार के भरोसे मत रहिए, आप अपने पैसे generate करिए, earn your own revenue, generate your own money, get your own resources. So Central Electricity Regulatory Act was one such thing. Under the act, the government also established Central Electricity Regulatory Authority. All right, जिनका काम होगा ये देखना कि overcharging ना हो, जिनका काम ये भी देखना होगा कि companies misuse ना करें अपने monopoly power को. That was what they had to do. That they had to make sure that companies don't misuse their monopoly power, they don't overcharge, and they also had to make sure that companies don't become overpopulist. They fix a minimum tariff for electricity. 2003 we did this. 2004 the government also passed State Electricity Regulatory Act. All right, कि हर state सरकार के ऊपर ये onus डाला. The responsibility was put on state governments that there will be an Electricity Regulation Act under which you have to establish a State Electricity Regulation Authority.
हर स्टेट के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट दे हैव टू एस्टैब्लिश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन अथॉरिटी. All right, and again that their job will be same, making sure that overcharging is not done, tariffs are fixed, people are not misusing the power they have, and so on. So the idea was to modernize electricity sector in India. Along with that, government also allowed private sector to enter distribution sector and transmission and generation sector. तो वहीं से शुरुआत हुई टाटा पावर, रिलायंस पावर एंड सो ऑन. पहले भी थे ये लोग, बट इनको फॉर्मलाइज किया गया. All right, there were private power generation companies in India from 1992 itself, but these companies were now given a legal status, they were formalized, and the distribution companies were not there, they were now allowed. कि power distribution private sector करेगा, public sector नहीं करेंगे कुछ शहरों में. आज भी आप देखेंगे वही चलता है. Many cities, the private sector does the distribution, public doesn't. All right, so the idea again was to make sure there is competition, there is discipline. चूक एक जगह जरूर हुई है. देयर इज वन मिस्टेक दैट वी हैव नॉट येट कवर्ड. ये सजेशन था. द इनिशियल सजेशन वाज देयर शुड बी ओपन एक्सेसिबिलिटी टू इलेक्ट्रिसिटी. व्हाट डज दैट ओपन एक्सेसिबिलिटी मीन? एनीबडी कैन सेल इलेक्ट्रिसिटी टू एनीबडी. दैट इज ओपन एक्सेसिबिलिटी, कि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे और किसी को भी बेचे. लेकिन ये देखा गया 2024 आते आते भी that open accessibility to electricity is on paper but not in practice. Easy example देता हूँ तुम्हें, दिल्ली को ही ले लो. So if you are in central Delhi, you are bound to purchase your electricity from BSES. You cannot buy it from anybody else. If you are in North Delhi, you are bound to purchase your electricity from TDPL. You are not allowed to purchase it from anybody else, which means that even though we privatized electricity, we did not make the sector competitive. हमने प्राइवेटाइज तो कर दिया इलेक्ट्रिसिटी को, कंपटीशन नहीं लाए. तो नतीजा क्या है? बीएसईएस का जो मन आ सकता है चार्ज कर सकते हैं, टीटीपीएल का जो मन आ सकता है चार्ज कर सकते हैं. सो प्राइवेटाइजेशन इज नॉट द क्योर, कंपटीशन इज द क्योर. वी शुड फोकस ऑन दैट. जब तक आप कंपटीशन नहीं लाएंगे मार्केट में, द कंज्यूमर्स वोंट बी एबल टू गेट द बेस्ट डील. All right, but that has been the missing link, especially in electricity distribution. Now, and again I repeat, even today in India, more than 90% of electricity sector is controlled by the government. The entire rural electrification is with the government. Most of tier 2, tier 3 city rural electrification is with the government. So it's not that government has gone out anywhere, but this is a challenge. एक और बात भी है, जो equipment supplier है electricity system को, like if you are setting up an electricity generation company, you will need machines to produce that electricity. The major equipment supplier is Bharat Heavy Electricals Limited, again government. Understand that? There is hardly any competition to BHEL in that sector at the moment. और उसका एक बहुत बड़ा कारण है, अगर आपको याद हो, मैं आपको महारत्न पढ़ाते हुए ये बता रहा था, that 90% of electricity generation is done by the government, and government companies buy their equipment from BHEL. So any new company will not be able to find its place in such a market, and therefore we hardly see any new investments in India with respect to this space. So we will have to improve upon those aspects in electrification. Okay, then you write the second point. Generation companies are making a loss of more than rupees 2 lakh crore. All right, of more than rupees 2 lakh crore. This is huge amount. And again, these generation companies are government generation companies or public generation companies. So finally the government has got to pay this money. Why are they making this loss? Because the distribution companies are not paying them back on time. All right, that is a major reason of their loss. That generation companies are making a loss because the distribution companies are not paying back. All right, and why are the distribution companies unable to pay back? Because people don't pay them. So it becomes a story like that. कि लोग अपना बिजली बिल नहीं भरते, उससे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जनरेशन कंपनी को नहीं दे पाते, तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी नुकसान में, जनरेशन कंपनी नुकसान में. बात यहीं खत्म नहीं होती, फिर ये दोनों मिलकर पब्लिक सेक्टर बैंक से जो लोन लेके रखते हैं उस पर डिफॉल्ट करते हैं. तो फाइनली ये लौट के पब्लिक पे ही आता है. इट इज नॉट दैट पीपल कैन गो स्कॉट फ्री, बट दैट इज हाउ द सिस्टम अनफॉर्चुनेटली हैज
charged up. So the generation companies are running in a loss because the distribution companies have not been giving them timely payment. All right. Gencoms, there are private companies that there's Tata Generation company, Adani's, I mean, they. No, see, so the public sector goes in a loss because of the usual reason. Nobody owns that loss. When will a loss worry you? When there is a private investment involved. You know, as a public investment, what happens is the loss are either written off by public money or the loss are remaining unpaid for years. Then a new scheme is brought in. That scheme is kind of an eye wash. फिर 4-5 साल उसके बहाने काम चल जाता है. So this is the challenge. Plus, with public sector, the political interference is tremendous. That again, complicates the issue because then the political parties, they won't like you to, charge a lot and so on. So that is the real challenge that you would have. All right. You write within this. Next point, third. Total losses of distribution companies. Total losses of distribution companies are now more than 5 lakh crore 5 lakh crore due to operational inefficiency like lack of electronic metering, So many places what happens is there is either manual meter or at best a digital meter and people fix it up and the meter doesn't move. Also अब सोचिए हमारे देश से एक कंसेप्ट अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, बट एक कंसेप्ट होता था हमारे यहाँ 0 watt बल्ब. 0 watt पे कैसे बिजली चलेगी? 0 watt पे एनर्जी कहाँ है? बट ये 0 watt बल्ब क्या थे कि जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी सोर्सेस थे वो तब टैप कर पाते थे इलेक्ट्रिसिटी को बिलिंग के लिए जब ये कम से कम 5 watt का हो. So unless the 5 watt energy is not supplied through the wire, the meters used to be such in the past that they could not catch that there is electricity moving. So what was the net result then? People created these 2 watt bulbs and 2.5 watt bulbs and they called them 0 watt bulbs. 0 watt because now there will be nothing charged. You understand that? So thankfully now with electronic metering, the 0 watt system is going away because with electronic meter, even if you put a 2 watt, it immediately catches. कैसे कुछ electricity चल रहा है यहाँ पे. तो ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एक problem है. तो ये है operational efficiency. In the same thing you write, put a comma. Managerial inefficiency. Which is reflected in theft of electricity. In a bracket you write aggregate tariff and commercial loss, AT&C is what it is called. Aggregate tariff and commercial loss, AT&C. Aggregate tariff and commercial loss of electricity sector. Aggregate tariff and commercial loss of electricity sector has been recorded at above 21% of total electricity supplied. Above 21% of total electricity supplied. Okay, I'll tell you what that implies. Theft of electricity is when the management is poor. हमारे देश में आप देखेंगे लोग अपना एक लकड़ी का डंडा रखते हैं, बोलते तुम इधर आओ भाई,
उधर कहाँ जा रहे हो, and then the electricity is taken on one side. So that is theft of electricity, that people steal electricity, they don't bill it, and they use electricity. So this is one challenge. या कभी कभी क्या करते हैं, एक फेज में तार जा रही है, अपना तार भी वहीं डाल दिया, उस फेज की बिजली अपने यहाँ ले ली. तो ये सब काम धंधा खूब चलता है. तो ये चोरी है बिजली की. अब 21% आप सोचिए, अब सोच के देखो हालत क्या है. सो द एवरेज प्लांट लोड फैक्टर इज अराउंड 65%. तो आप 100 यूनिट्स प्रोडक्शन का आपका कैपेसिटी है, यू आर प्रोड्यूसिंग 65 यूनिट्स. अब जब आप ये 65 यूनिट्स बेचते हैं तो इसमें से भी 21% चोरी हो जाता है. So that means finally you are having a capacity of 100 unit and you are able to bill for 50 odd unit. Definitely the losses will multiply. You understand that? So that is managerial inefficiency. And then you write, and political interference अच्छा एक बात बताइए, एक पढ़े लिखे आदमी को क्या करना चाहिए? लोगों को समझाना चाहिए कि बिजली बिल देना जरूरी है, या खंबे पे चढ़ के कटी हुई बिजली जोड़ देनी चाहिए? जोड़ देनी चाहिए. ठीक है. अब चलो ठीक है, तुम जैसा कहो, मैं मानता हूं कि एक पढ़े लिखे आदमी को खंबे पे चढ़ के बिजली जोड़ देनी चाहिए. तो उस केस में नहीं, चलिए यहीं से बात को पिक करते हैं. तो अगर खंबे पे चढ़ के बिजली जोड़ देनी चाहिए, तो वो पढ़ा लिखा आदमी जब कोई भी और कहीं भी चोरी कर रहा होगा तो उसको कैसे डिफेंड करेगा बिना ढीठ बने हुए? उस पढ़े लिखे आदमी को किसी ने मान लो थप्पड़ मार के और पैसे छीन लिए, और वो पढ़ा लिखा आदमी पुलिस में कंप्लेन करने गया, तो पुलिस वाले ने कहा क्या गलत काम करते हो भाई, थोड़ा सा पैसा ही तो छीना है, तुमने रेजिस्ट किया तभी तो थप्पड़ मारा, नहीं तो बेचारा वायलेंट थोड़ा ही था. मैं बचपन से जानता हूं गांधीवादी है, तुमने अंदर का भगत सिंह जगा दिया. फिर क्या करना चाहिए उस पढ़े लिखे आदमी को? कोई दिक्कत नहीं ना फिर तो. अब बताओ सही जवाब क्या है? खैर, मैंने इसलिए कहा आपसे ये बात क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं अभी, वो बात बात में कहते हैं देश का नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए, और वो ये हरकत कर रहे थे 2015 के दिल्ली इलेक्शन के पहले कि वो खंबे पे चढ़ के बिजली के जो तार हैं वो जोड़ रहे थे कि आपकी बिजली काट दी गई है, मैं जोड़ देता हूं. ये कैसे जस्टिफाइड है? बिजली काटी गई क्योंकि आपने बिल नहीं पे किया. तो अगर आपने बिल नहीं पे किया और कोई और आके उस बिजली का तार जोड़ रहे हैं, तो वो खुद को पढ़ा लिखा कैसे बोलेंगे और देशभक्त कैसे बोलेंगे? चोरी को बढ़ावा देने वाला आदमी देशभक्त हो गया. आप कोर्ट में केस करिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है कि मेरी बिजली गलत काटी गई है. उसको सिस्टमिक कहते हैं. कानून तोड़ने को एनार्की कहते हैं. अगर एक आदमी तोड़े, फिर दूसरे तोड़ेंगे, फिर चौथे तोड़ेंगे, फिर पांचवें तोड़ेंगे, किनको रोकिएगा आप? मुख्यमंत्री बन के अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना दे सकते हैं, वो इनकी कैपेबिलिटी है. दैट ही कैन डू. But the problem is that the governance doesn't work like that, no? Again, I repeat, if somebody has a problem, somebody says, look, my meter is not functioning correctly, or I have been billed wrongly, go and file a case. I mean, that's completely okay. कभी कभी आप लोगों से वो भी जवाब मिलता है मुझे, सर केस में तो बहुत टाइम लग जाता है. मतलब बात वही रही ना कि तालिबान वाली जस्टिस हो, इमीडिएट, इंस्टेंट. तुमने गलती की, चलो गोली मार देते हैं तुम्हें. बाद में पता चला बेचारा गलती किसी और ने की थी, मर गया ये. अब सोच के देखिए, ये एक्सक्यूज थोड़ा ही चलेगा कि कोर्ट में टाइम लगता है इसलिए मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा. फिर तो आप अंडरवर्ल्ड जाएंगे, क्योंकि अंडरवर्ल्ड ही इंस्टेंट जस्टिस दे सकता है. फिर दाऊद इब्राहिम देश का दुश्मन कैसे हुए? वो तो इंस्टेंट जस्टिस देते थे. बड़े अच्छे दोस्त थे फिर तो हमारे देश में. वो थोड़ी सी स्मगलिंग कर लेते थे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट पूरा करने के लिए, थोड़ा हफ्ता वसूली कर लेते थे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज पूरा करने के लिए. आप समझिएगा, मैं जानबूझ के आपसे ये डिबेट करता हूं या डिस्कशन करता हूं या समझाने की कोशिश करता हूं. असली हीरोगिरी नियम मानने में है, क्योंकि वो ज्यादा डिफिकल्ट है. नियम तोड़ना कोई हीरोगिरी नहीं है, वो सबसे आसान है. तुम्हें पेशेंस से समझाऊं, वो ज्यादा क्रेडिबल है. चुप रहो बे, अकल नहीं है क्या? क्या खा के आते हो? सोचो क्या क्या आसान है ये बोलना. और तुम क्या ही बोलोगे? एक टीचर ने कि तुम्हारी जब बेइज्जती की तबीयत से पास्ट में, क्या ही बोल पाए? नहीं कुछ. गुस्सा आया उनके प्रति, लगा कि अबे बेवकूफ आदमी, मैं बस होती तो बताता तुझे. नहीं था ना बस. लेकिन तो टीचर ने भी गलत काम किया, लेकिन वो हीरो नहीं थे इसलिए तुम्हारे नजर में. लेकिन हीरो कौन होंगे? जो इतना बूढ़ा हीरो नहीं होता, ठीक है? हीरो आप लोग बन सकते हैं.
हीरो आप लोग बन सकते हैं क्योंकि आप लोग जवान लोग हैं, ठीक है। 50-55 साल वाले लोग जब उधर जा रहे हैं, मैं 50 पहुंच जाऊंगा 2 साल में। बॉलीवुड का नहीं हूं मैं। अरे सब ठीक है लेकिन एंड ऑफ द डे एज कैचेस अप, डोंट फॉरगेट दैट। आप नहीं जानते, पता चलता है आप पहुंचिए 48 के, आपको समझ में आएगा कि अब मेरी उम्र हो गई। बट एनी वेज जोक्स अपार्ट, नहीं, मेरा मतलब आपसे ये बताना था कि अगर आपको हीरो बनना है, मैं तो जो बनना था बन गया, नहीं बना, लाइफ सेटल हो गई, अब तो इंडिया से कहीं जाऊंगा भी नहीं, आपको पक्का अश्योरेंस देता हूं। लेकिन अगर आपको हीरो बनना है तो नियम मानना शुरू करिए। जब आप नियम मानते हैं तो आप रियल सिटीजन हुए। नियम तोड़ना गुंडागर्दी है जो सबसे आसान है, फिर रिपीट कर रहा हूं, उसमें कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होती। देयर इज नो बिग डील इन डूइंग दैट। किसी को भी हो, अभी मैं पढ़ा रहा हूं, तुम में से एक उठो और मुझसे डिसएग्री कर रहे हो तो बोल दो बकवास कर रहे हो, तो मैं जा रहा हूं इस क्लास से, चले जाओ, ये ज्यादा आसान है। डिफिकल्ट तो है कि क्लास के बाद मुझे पकड़े, सर आपने ये बात कही थी पर मुझे लगता है ये बात सही है, आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे ये बात सही कैसे है। दिस इज अ डिफिकल्ट थिंग टू डू। वो तुम लोग करते हो, तो तुम में हीरो बनने के गुण हैं। अब दिक्कत यह है कि उस गुण को तुम उजागर करते हो या अनागर करते हो, अब वो तो तुम्हारे ऊपर है। गुण तो है तुम में, तुम पेशेंटली बातें सुन लेते हो, चीजें देख लेते हो, नियम मानते हो आज, बट अब उस नियम को मानते रहो तो तुम हीरो हो, तो कोई डाउट ही नहीं है। तो आपको यही समझा रहा हूं मैं, दैट कभी भी ये मत सोचिएगा दैट द वन हु ब्रेक्स द लॉ कैन बी द हीरो। द वन हु फॉलोज द लॉ एंड स्टैंड्स बाय इट एंड कीप्स इंप्रूविंग थिंग्स अराउंड विल बी द रियल हीरो। क्योंकि उनके वजह से फिर सिस्टम सुधरा, चीजें ठीक हुई। सिस्टम तो टेस्ट करेगा ही तुम्हें, ऐसा थोड़ी है टेस्ट नहीं करेगा, एक दिन करेगा, दूसरे दिन करेगा, एवरी डे देयर विल बी अ टेस्ट। कोई ना कोई कुछ ना कुछ हरकत कर रहे होंगे, बट अगर उनकी वजह से तुमने भी हरकत वही कर दी तो उन्होंने तुम्हें हरा ही दिया ना, क्योंकि उन्होंने तुम्हें अपने जैसा बना लिया। अगर तुम कहते हो सर पता है उसने ऐसा गड़बड़ किया ना, उसकी वजह से मैंने ऐसा कर दिया, परफेक्ट, द फेलो बीट यू व्हेन इट केम टू द मेटाफिजिक्स ऑफ थिंग्स, because the fellow made sure that you become like that person. But if you don't become like that person and remain what you want to be, then you are the real victorious person, no? कि ठीक है तुम जितना मर्जी टेस्ट कर लो, रहूंगा तो मैं वही जो मैं हूं, बदलने वाला नहीं हूं मैं आराम से, क्योंकि मैं सही पाथ पे हूं। तो ये समझा रहा था। खैर मैं एग्जाम्पल आपको क्यों दे रहा था मैं बताता हूं। जो पॉलिटिक्स है हमारा, जो आखिरी पॉइंट मैंने लिखवाया, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, वो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स है। तो उसमें क्या होता है, थिंग्स आर टेकन टू द रॉट बॉटम। मैं आपको बिजली फ्री दे दूंगा, मैं यहां बिजली फ्री दे दूंगा, मैं बिजली कम में दे दूंगा, जबकि किसी भी पढ़े लिखे आदमी को पता है कि फ्री में नहीं दी जा सकती चीजें। देयर हैज टू बी अ रिकवरी ऑफ कॉस्ट। और तभी मैं दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि वो आईआईटी के हैं, तो सवाल ही नहीं है कि उनको नहीं पता कि वो क्या हरकत कर रहे हैं। मतलब फिर यह हुआ कि जब मुझे नेता बनना है और पावर लेना है, पावर लेने का शॉर्टकट क्या है, लोगों के बेसिस इंस्टिंक्ट को अपील करो। आप सोच के देखिए, मैं आपसे ये बात भी हमेशा शेयर करना चाहता हूं। अब हम लोग एंड कर रहे हैं क्लासेस, तो कुछ बातें तुम्हें बताना चाहता हूं। यू हैव बीन विथ मी फॉर 120 ऑड क्लासेस, मे बी अ लिटिल मोर, एंड यू विल बी विथ मी फॉर अनदर 20-25 क्लासेस, एंड टेक माई वर्ड्स, यू विल नेवर सी मी क्रैकिंग अ चीप जोक। आप कभी नहीं देखेंगे कि मैं कभी भी एक चीप जोक क्रैक करूंगा। लेकिन ऐसा तो नहीं आपको हंसा नहीं लेता हूं। बहुत सारे टीचर्स को मैं देखता हूं, उनको लगता है चीप जोक क्रैक करूंगा तो मैं ज्यादा पॉपुलर हो जाऊंगा। हीरो नहीं है, सिंपल सी बात है। चीप जोक क्यों क्रैक करे भाई? ह्यूमर सिर्फ बेसर इंस्टिंक्ट्स में थोड़ी है। ह्यूमर इज इन मेनी अदर थिंग्स। ह्यूमर कैन बी सेल्फ डिप्रिकेशन। Why should I find humor in the baser instinct, जिसमें 4 लोग अनकंफर्टेबल होंगे, 10 लोगों की इज्जत जाएगी, विमेन को थोड़ा डिग्रेड करके दिखाया जाए या कमोडिफाई किया जाए? क्यों? There are 100 other things to find humor in. I'll find my humor there and I'll enjoy myself. और आपको विश्वास तो नहीं दिला सकता मैं, बट बिलीव करिए मेरे टीनेज डेज से ये आदत थी। I would not appreciate cheap humor. मुझे लगता था इनका सेंस ऑफ ह्यूमर खराब है। जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर ठीक होगा वो बहुत सारी चीज़ों पे हंस सकते हैं। और दुनिया में बहुत, सबसे पहले तो हम खुद ही हैं अपने आप, ऐसी ऐसी हरकतें दिन 3-4 बार करते हैं कि हम खुद उस बात पे हंस सकते हैं। तो आप उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ये आपको समझाना चाहता हूँ। ये आप डिस्कार्ड कर सकते हैं, आप कह सकते नहीं सर बेकार बात है, हम तो चीप जोक्स पे ही हंसेंगे। मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये नहीं कह रहा हूँ ये कोई बहुत डिग्रेडिंग या गलत बात है, बस शेयर कर रहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि एज अ टीचर व्हेन आई एम टीचिंग यू, व्हाई शुड आई टेक रिकॉर्ड्स टू अ चीप जोक? I don't need to do that. I can make you laugh. मुझे तुम्हें अभी
मुझे तुम्हें हंसाने से मतलब है ना, ठंडा करने से, ठीक है पढ़ाते पढ़ाते बात बहुत ज़्यादा हो गई तो थोड़ा एक सॉफ्ट कर दी चीज़ों को, आसान सी कुछ हंसी मजाक कर लेंगे। तो ये आपको समझाना चाह रहा था। आप भी कोशिश करिए देखने का आगे, आपकी पोजीशन अच्छी है, ईश्वर करें आप आईएएस बन जाएं। तो आईएएस बनने के बाद आपने एक गड़बड़ कर ली अपने साथ, आप एक ऐसा मुकाम हासिल कर लेंगे जहां लोग आपको लुक अप टू करेंगे। यू नो, पीपल विल लुक अप टू यू दैट ओके दिस पर्सन इज एन अचीवर, हाउ इज दिस पर्सन बिहेविंग। अब मजबूरी हो गई आपकी। मेरे एक दोस्त हैं, अब तो नहीं पढ़ाते हमारे साथ, पहले पढ़ाते थे, उनसे मैं हमेशा ये बात कहता था कि आप अगर अच्छे जोक्स करें तो भी बात ठीक है, लोग हंसेंगे ही, ज़रूरत नहीं कि आप जोक्स को नीचे ले जाएं, बिकॉज इफ़ यू कीप जोकिंग ऑन नॉर्मल थिंग्स ऑल्सो यू हैव अ वंडरफुल सेंस ऑफ ह्यूमर, पीपल विल लाफ एट थिंग्स, बट दैट इज़ द पॉइंट आई कीप सेइंग दैट यू नो, आप क्या बनते हैं वो फाइनली आप ही डिसाइड करेंगे अपने एप्टीट्यूड से। बट एनीवेज, अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा लेक्चर दे रहा हूँ तो यू बेयर विथ मी, बट मैं हमेशा ये बात मानता हूँ दैट यू नो, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यंग डे, आप कभी कभी लोग कहते हैं यंग डेज में चीप जोक्स कौन सी बड़ी बात है, चीप नहीं लगता, नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ है, बिल्कुल मानता हूँ इस बात को, आई एम नॉट डिनाइंग दैट एट ऑल। मैं बस कह रहा हूँ कि धीरे धीरे तुम यंग नहीं हो रहे हो ना, अब तुम एडल्ट्स बन रहे हो। तो एडल्ट्स के पॉलिसी डिस्कोर्स अलग होते हैं, मैं कैसे बिहेव करता हूँ, मैं क्या पुट अप करता हूँ, बिकॉज द नेक्स्ट जनरेशन इज वॉचिंग मी एंड यू हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे ना चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, कोई चारा नहीं तुम्हारे पास। तो उस केस में यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट व्हाट एम आई स्पीकिंग, what am I enjoying, and am I enjoying something baser, is that worth it also, you know, that is the idea, that is nothing else। किसी भी women को debase करने में क्या जोक हो सकता है, आप सोच के देखिए, कोई जोक नहीं होगा, you know, लेकिन हम नहीं रियलाइज करते कभी। तो ये समझा रहा था, anyways you bear with me for the digression, but मैंने इसलिए समझाया कि हर फील्ड के अपने नॉर्म्स होते हैं, एवरी फील्ड, एवरीबडी हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे गो बाय दोज नॉर्म्स। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो आपका नॉर्म होना चाहिए दैट आई विल टेल पीपल हाउ टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड देन आई विल हेल्प देम इन मेकिंग श्योर दे लिव अ बेटर लाइफ। But I will not tell people to be indisciplined, and I will not create a populist culture which makes it a race to the bottom. Understand it like that. You know, that is what I was trying to teach you actually. Electricity sector इसकी वजह से बहुत भुगत रहा है। एक कहानी सुना रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि अब वो आउटडेटेड हो गया। 2013 the total loss, 2014 sorry, in 2014 the total losses of discoms had reached 3 lakh crore rupees, 3,48,000 crore in fact, in November 2014, 3,48,000 crore total losses of discom। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम इंट्रोड्यूस किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसका नाम रखा उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना, उदय स्कीम। ऑलराइट, उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना, this was introduced in 2014 November। So the government said, look, under this Ujjwal Discom Assurance Yojana, what we will do is we will give the state governments an opportunity to take up 75% of the loans of their distribution companies। जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं स्टेट में, वो राज्य सरकार के अंदर ही होती हैं, दे आर विद इन द स्टेट गवर्नमेंट। So the central government said that we are giving this one-time opportunity that state governments can take up 75% of loans of their distribution companies and it will not be counted in their limit of borrowing। जैसे स्टेट गवर्नमेंट का लिमिट सेट रहता है ना बोरोइंग का, सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें काउंट नहीं होगा, इट विल नॉट बी काउंटेड इन देयर लिमिट ऑफ बोरोइंग। एंड व्हाट डू द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव टू डू? The state governments now can issue bonds in the market, the state governments can issue bonds in the market, recover the money and give it to the bank। तो नतीजा क्या होगा? डिस्कॉम के ऊपर से लोन का बोझ हट गया, किसने ले लिया? स्टेट गवर्नमेंट ने। The discoms don't have the burden of loan, who has taken it? State government। And the banks don't have to suffer with pending loan because the state government now issues bonds and pays the money to the bank। तो twin balance sheet deficit ठीक हो गई। You understand my point? And then it was said that within these 7-8 years, the state government will do reforms in DISCOM. What kind of reform? Managerial efficiency, operational efficiency, electronic metering, distributional efficiency, making sure electricity reaches everywhere and you collect money on that। तो जैसे वो ये reform करेंगे, the electricity system in the state will become better and they will be able to improve their recovery and their economic activities to such an extent that they will be able to pay back these bonds 8 years, 10 years later।
डू आई बिलीव आई रीच यू ऑन दैट? अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ? Now the state governments participated, all 29 states in those days, I mean 28 states in those days. सब ने participate किया और बोला ठीक है, we will participate in Uday and do things. The first 2-3 years the schemes went well. In the first 2-3 years, the losses of the discoms could be controlled. Modernization of discoms was introduced. In fact, the stealing of electricity, the AC and AT&C loss, एवरेज टैरिफ एंड कमर्शियल लॉस, ये जो लॉस था इसको भी कम करके 16% पे ले आए. इट यूज टू बी 24% एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. दिस वाज रिड्यूस्ड टू 16% बाय 2017 ऑड. लेकिन फिर 2018 आया एंड देयर वाज इलेक्शन इन छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और फ्री बीज बंटना शुरू. मैं आपको यहाँ फ्री इलेक्ट्रिसिटी दूंगा, मैं वहाँ फ्री इलेक्ट्रिसिटी दूंगा. फिर जनरल इलेक्शंस आ गए 2019. अब तो बवाल हो गया, हर जगह फ्री इलेक्ट्रिसिटी ले लो. तो जो हमने बेनिफिट लिया था उदय में एंड हमने जो हटाया था डिस्कॉम का लॉस, अगेन इट कम्स बैक एंड बाय 2023 नाउ इट हैज अगेन रीच्ड अबव 5 लाख करोड़. आप सोच के देखिए ये कैसा रक्त बीज है कि हमने 3.5 लाख करोड़ का नुकसान हटाया, 3.5 लाख करोड़ वर्थ ऑफ लॉस रिटर्न ऑफ during 2014, and within 10 years it has come back to become 5 lakh crore again. तभी मैंने रक्त बीज बोला, आपने नाम सुना होगा रक्त बीज का. That's why I use the term रक्त बीज, कि आप कट करिए वो भी वापस ग्रो करके आ गया. और ये क्यों होता है? Because the core reason which is political populism, जिसकी वजह से मैं 10 मिनट आपका सिर खा रहा था, the core reason that is political populism has not been removed. The political parties will have to come together and develop a consensus. Are they actually pro-country or are they pro-power? क्योंकि जब आप प्रो कंट्री होंगे तो आपको पता होगा कंट्री के लिए क्या अच्छा है. आप कभी, मैं जानता नहीं आप में से कितने लोगों को शौक है, मुझे जैसे बायोग्राफीज पढ़ने का बहुत शौक है, पुराने लीडर्स का या बड़े कैप्टन्स का एंड सो ऑन. तो जो बायोग्राफी जब मैं पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ जितने भी बड़े लीडर हुए पास्ट में, ऑल ऑफ देम यूज्ड टू स्पीक ट्रूथ टू द पब्लिक. Their methods could be different. कुछ लोग मीठे तरीके से सच बोलते थे, कुछ लोग बिल्कुल कड़वे तरीके से सच बोलते थे. But they will speak truth to the public and tell them, look, this is where you stand, this is the reality, go ahead and do it, otherwise you will be ruined. They would do like that. That is what a leader is about. कि आप सच बोल सकें कि भाई देखो ये दिक्कत है और इसको ठीक करना पड़ेगा. लेकिन अगर आप पॉपुलिज्म करेंगे कि नहीं, अच्छा थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ, थोड़ा खराब कर लेता हूँ, थोड़ा पावर ले लूँ. कुछ लोग ये भी कहानी सुनाते हैं, मैं नहीं करूँगा तो मेरा पावर चला जाएगा, और जब पावर ही चला जाएगा तो मैं किसी का भला नहीं कर पाऊँगा. Once you start getting corrupted, there is no limit to it. You become a prisoner of your own thing then. So that is the point that India is facing in the last, say, 3-4 decades, where we have not had a person who would go and speak to people that, look, it's not done. तो एक समय क्या था, 90s का ज़माना क्या था, या इवन अर्ली 2000s, देयर वाज एटलीस्ट अ पॉलिटिकल कंसेंसस. तो किसी को कहते नहीं थे, लेकिन सारे ऑपोजिशन गवर्नमेंट मिलकर एक रूल बना देते थे, दैट दिस इज द रूल, नाउ यू हैव टू लिव विथ इट. पीपल वुड लिव विथ दैट. ये कंसेंसस ब्रीच होना शुरू हुआ है इन द लास्ट 14-15 years, when whosoever has been in opposition has been talking nonsensical. That you bring me to power, I will change this, I'll change that, मैं ये ठीक कर दूंगा, मैं ऐसे मुफ्त दे दूंगा, वो मुफ्त दे दूंगा. नतीजा क्या होता है? डिस्कोर्स हम नीचे लेते जा रहे हैं. आप हमेशा दिमाग रखिएगा दैट पॉलिटिकल डिस्कोर्स, मैं क्यों बात कर रहा था सेंस ऑफ ह्यूमर की, एंड ऑफ द डे अ क्लासरूम इज अ डिस्कोर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी. सर्कस नहीं है ना, क्लासरूम है. तो क्लासरूम में एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी अगर हो रही है तो उसका डिस्कोर्स होना चाहिए कि तुम्हारे दिमाग का जो इंटेलेक्चुअल सेंस है, जो लोब्स फंक्शन करते हैं, वो जागृत रहे हमेशा. तो ह्यूमर से लेकर डिस्कशन तक तुम्हारे इंटेलेक्ट को अपील करते रहना चाहिए. तो ऐसे ही पॉलिटिक्स की अपनी एक इंटीग्रिटी होती है. देयर इज अ डिस्कोर्स टू बी सेट. अगर पॉलिटिक्स का डिस्कोर्स ये हो जाएगा कि नहीं भाई कितने सारे हम रिलीजियस प्लेसेस तोड़ सकते हैं, अगर पॉलिटिक्स का डिस्कोर्स ये हो जाएगा कि मुफ्त में क्या दे सकते हैं, तो समझ लीजिए कि ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी दोनों एक ही लैंग्वेज बोलेंगे फिर, और उससे निकलने में 20, 30, 40 साल लग सकते हैं. There can be 30, 40 years to get out of a bad discourse, like it is difficult to get out of a good discourse. Understand that.
तो इसीलिए डिस्कोर्स को लेकर बहुत कॉन्शियस होना चाहिए दैट व्हाट इज द पॉलिटिकल डिस्कोर्स, व्हाट इज द पॉलिटिकल नैरेटिव, व्हाट इज द टॉक विच इज हैपनिंग. फ्रीबीज, पॉपुलिज्म, communalism, casteism, they are those shocks rather than stimulants in a critical minimum effort. And when you remove these things and focus on growth, focus on inclusion, focus on education, focus on healthcare, they are your stimulants. And that is the political discourse कि वोट किस बात पे मांगा जा रहा है. इसकी बहुत सिंपल सी बात है. तो क्योंकि लोग जो है हो सकता है इमोशनली मोटिवेट हो जाए, नहीं मैं ऐसा कर दूंगा. जो यंगस्टर्स हैं उनको लगेगा अच्छा मैंने किसी को दबा दिया, इससे मेरी जीत हो गई. जीत तो हो गई आपकी टेम्पररी, वो भी वेट कर रहे हैं कि किस दिन मुझे मौका मिले मैं पलट के दूं एक. लेकिन अगर सच में कंसेंसस से कोई बात डिसाइड हो गई तो सबकी जीत हो गई उसमें. देन द कंट्री विंस. तो ये दिमाग में आप रखेंगे दैट द पॉलिटिकल डिस्कोर्स शुड बी इन द राइट डायरेक्शन टू मेक श्योर दैट राइट रिजल्ट्स कम. that is the aspect. इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में आप देखिए टोल रोड्स को लेके इतना हंगामा हुआ, लेकिन अब कोई टोल रोड देने से मना नहीं करता है ना, टोल मनी देने से, क्योंकि नितिन गडकरी जी ने पहले दिन ही उसको स्टैंप आउट कर दिया कि कोई मुफ्त का चीज़ नहीं चलेगी, आपको देना ही पड़ेगा. तो लोगों ने कहा अच्छा ये तो अब देना ही पड़ेगा, चलो दे देते हैं. That is the aspect that you just have to tell people with conformity you got to do it. Electricity is suffering because of that big time. So in spite of Uday, I repeat, big loss, and the average tariff and commercial loss, as I made you write, is again above 20%. So we are kind of back to where we were in 2014, maybe worse than that. I hope the part is clear to you. For that there is already, Suryodaya will cover it, but for that there are schemes in the picture, rooftop solar harvesting. So Suryodaya doesn't need to do that. All right. Which one? Uday is now gone. Uday was for 7 years. So 2020 onwards it's gone, 21 onward. That is why I told you it is outdated. I don't see it coming in exam, but I told you the story. मैंने इंक्लूसिव ग्रोथ पढ़ाते हुए आपको एक और स्टोरी सुनाई थी, वो भी इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर से थी, सौभाग्य स्कीम, इफ यू रिकॉल, सहज बिजली हर घर योजना. सो कीप दैट ऑल्सो एज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन डेवलपमेंट इन इंडिया. ऑल राइट, नाउ यू गिव अ हेडिंग, यू राइट रोड डेवलपमेंट इन इंडिया. रोड डेवलपमेंट इन इंडिया. Okay, I'm answering a question. That's a very good question actually. That is electricity a basic necessity, and can the government provide it free to the poor? So electricity can be counted as a basic necessity, but again like other basic necessities, if you don't recover the cost, you will not be able to sustain. So you need to recover, the cost is not that high. I can be a poor person using one LED bulb which can be given for free to me, using one direct current fan which can be given for free to me. What is my electricity consumption for the whole month? Not more than 50 units, maybe 60 units. I use these 60 units, what will be my bill? 100 rupees. Why can't I pay that if I can recharge my phone by paying 299? मैं फोन रिचार्ज करा सकता हूं, उस पर नाच गाना देख सकता हूं, बिजली बिल देने से मैं गरीब हो जाऊंगा. पहली बात. सेकेंड, सरकार का क्या काम है? कम्युनिटी बिल्डिंग्स जो हैं, दे कैन हैव इलेक्ट्रिसिटी सपोर्ट, लाइक स्कूल बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, पंचायत ऑफिस, जो गांव की बात कर रहा हूं या शहरों में भी जो कम्युनिटी बिल्डिंग्स हैं, गिव देम गुड इलेक्ट्रिसिटी सपोर्ट. बट व्हेन इट कम्स टू प्राइवेट हाउस होल्ड, they should be built for the electricity they use to conserve electricity also. तुम कोई अच्छा एक बात ऐसा सोचो, तुम्हें बना देते हैं कॉलेज से पहले का 12th 11th 12th, तुम्हें मतलब सिर्फ तुम नहीं, हम में से कोई भी, मम्मी 20 रुपया दो, थम्स अप पीना है और समोसा भी खाना है. अरे बेटा आज नहीं, कल ही तो तुमने खाया था. ये क्या बात हुई, कल ही खाया था तो आज नहीं खा सकता क्या? दो तो 20 रुपये, समोसा खाना है, थम्स अप पीना है. अरे बेटा कल खा लेना, एक दिन बीच कर लो. ऐसे नहीं चलता. ये मम्मी कोई बात नहीं, मेरा मन कर रहा है. आपको कभी अच्छा नहीं लगता कि मेरा मन करे वो मैं करूं, ठीक है. अब इसको बदल देते हैं, इसको पहुंचा दिए आज. तुम एक हॉस्टल में रह रहे हो, अभी भी मम्मी पापा के ही पैसे हैं तुम्हारे पास,
लेकिन अब वो पैसे तुम्हारे हो गए। अब तुम निकले बाजार में, कल ही थम्स अप पिया था यार, आज छोड़ते हैं, ऐसा करते हैं कल पी लूंगा। क्यों आया तुम में ये बदलाव? क्योंकि तुम्हें समझ आया खर्चे का मतलब क्या होता है। तो तुम्हें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ में आई कि ये जो थम्स अप मैं पी गया, अगर मैं ये नहीं पीऊं तो इसके बदले और क्या कर सकता हूं। इसीलिए बिल लगाना चाहिए। अगर सरकार को, समझ रहे हो मेरी बात? अभी एक और बात बताऊंगा, सब्सिडी वाली बात, वो भी अच्छा सवाल था। अब सरकार, अब ये भी बात है कि नहीं सर, लेकिन कुछ लोग शायद इतने गरीब हों कि बिल्कुल नहीं पैसे दे सकते। उसका तरीका क्या हो सकता है? यू आइडेंटिफाई योर पुअर्स, अर्बन और रूरल, collect their electricity consumption, tell them that up to 100 units electricity, we will transfer the money into your account. You want, you pay the electricity bill with it. If you can conserve electricity, the extra money is yours. तो बिजली वेस्ट करने की जगह बिजली बचाने वाली सब्सिडी दे दी तुमने। क्योंकि अब उनको पता होगा कि अगर मैं 100 यूनिट से कम कंज्यूम करूंगा तो बचा हुआ पैसा मेरा, और 100 यूनिट से ज्यादा कंज्यूम करूंगा तो मेरे जेब से पैसे जाएंगे। अब आप समझ रहे हैं मेरे बेटों को क्या क्या भुगतना पड़ता होगा, क्योंकि उनको बड़ा करते हुए मैं ये सारे आइडियाज लगाता हूं, या लगाया मैंने आज तक। हाउ टू इंसेंटिवाइज राइट बिहेवियर, इसी को नज पॉलिसीज बोलते हैं। नज पीपल इन राइट डायरेक्शन। सब्सिडी देना है ना, बिजली पे सीधा क्यों? बोलो 100 यूनिट तक किस बिजली तुम्हारे लिए फ्री है, पैसा तुम्हारे अकाउंट में डाल रहे हैं, लेकिन बिजली का बिल देना पड़ेगा। तो बिजली का बिल देना पड़ेगा का मतलब है या तो बिजली बचा लो और पैसे बचा लो, और नहीं तो बिजली ज्यादा खर्च करोगे तो पैसे दे दो जाके अपनी जेब से। पुअर्स को भी सपोर्ट मिल गया, बिजली भी बच गई, और कोई भी बिजली की चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि अब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को तुमने अधिकार दे दिया कि सभी से कलेक्ट कर लो। समझ गए? जब फाइनेंस सेक्रेटरी बनो तो मुझे एडवाइजर बनाना। ऐसे ही मजाक में ये सब बातें बोलता हूँ, डोंट वरी एट ऑल, बट कीप इट इन माइंड, देयर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वे टू हेल्प द पुअर्स रादर देन नेगेटिवली हेल्पिंग देम। ये हमेशा दिमाग में रखिए। गरीबों की मदद का मतलब चोरी चकारी अलाउ करना नहीं होता, इनडिसिप्लिन अलाउ करना नहीं होता। पुअर्स कैन बी हेल्प बाय डिफरेंट मेथड्स विच कैन बी यूज्ड। हम शॉर्टकट लेते हैं ये कि अच्छा कुछ हल्का सा काम कर दो, लोगों की नजर में बड़ा बन जाओ, गरीबों के वोट ले लो और पावर में टिके रहो। ये चीजें की जा सकती है। इट्स नॉट दैट दिस इज सच एन अनडूएबल थिंग आई एम सेइंग। ओके, यू टेक दिस अप, देन यू राइट in road development. Okay, before I teach you the challenges of road development, I need you to see few things again as to how we have traversed. So till 1997, total road development in India was 14 lakh kilometers. This includes all roads, district road, border road, national highways, state highways. I can believe we all know these, that majorly 4 kind of roads: district roads, border roads, national highway, state highway. All right, and then there is a new category that has been brought under Panchayati Raj, rural roads. All right, तो ये सभी रोड को मिला के 14 लाख किलोमीटर्स का रोड डेवलपमेंट था। मैं क्यों 97 पिक कर रहा हूँ आपको बताऊंगा, that why am I picking 97. So this was the road development, and total national highway development was 33,000 kilometers. Total national highway development (33,000 kilometers). You are right, Balasai, I agree with you. Now, when you talk about total road development, 14 lakh kilometers, total national highway development, 33,000 kilometers, that means that you have, that we had almost 2.5% of total road network as national highways. But this was very less compared to what India needed. So in 1998, that is why I picked 97, in 1998, government announced National Highway Development Program. It was Atal Bihari Vajpayeeji's idea. He said that
if a country has good roads, then good roads are like arteries of a human body. So if the arteries are strong, then the body will be strong. That is what he would always say. So he said that make good roads, make great roads all over the country, and you will make the country developed in the process. So 1998 National Highway Development Program was launched. 1999 government established National Highway Authority of India. National Highway Authority of India under Ministry of Road Transport and Highways. National Highway Authority of India under Ministry of Road Transport and Highway, MORTH. इनका काम था इंडिया में नेशनल हाईवेज डेवलप करना. All right, that was their work, that construct national highways, support state highways, coordinate with the different bodies and develop it. So National Highway Authority of India under Ministry of Road Transport and Highway, MORTH, Ministry of Road Transport and Highway. Okay, अब इसके लिए पैसे भी चाहिए थे. Where will the money come from? तो 2000 AD में एक और इंस्टीट्यूशन बना, सेंट्रल रोड फंड. You know, in 2000, another institution was made. It was called Central Road Fund. All right. इनका क्या काम होगा? Arrange the money and then provide it to National Highway Authority of India to finance road construction in India, so that you never go short of finance when it comes to developing road construction. तो ये सारे institutions बनाए गए, तैयारी की गई, and then in 2001, the National Highway Development Project Phase 1 was launched. All right, so that was 2001. National Highway Development Project Phase 1. National Highway Development Project Phase 1. This was launched in the year 2001. All right, NHDP Phase 1. अब इसके अंदर दो मेजर प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए. There were two major projects which started. One was Golden Quadrilateral. Golden Quadrilateral. अब ये Golden Quadrilateral क्या था? Connecting Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata. That was Golden Quadrilateral, connecting Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata. And this was supposed to be, and this in fact, this is now almost completed, a 5,833 kilometers project. You know, करीब 5,800 kilometers का project बनाइए, Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata, connecting them. At least with a two-lane highway, at least, there can be more, but at least a two-lane highway connecting them. And इसके साथ एक और project शुरू हुआ. It was called North-South East-West Corridor. So this North-South East-West Corridor was connecting Srinagar in north to Kanyakumari in south, Srinagar in north to Kanyakumari in south, and Silchar in east to Porbandar in west. So this north-south, east-west corridor, you know, north-south, east-west corridor, Srinagar in north to Kanyakumari in south, Silchar in east to Porbandar in west. All right, and this was supposed to be, this is again completed, 7,200 kilometers highway development project with at least again two-lane highways. All right, 7,200 kilometers highway development project with at least two-lane highways to be developed over India. So the idea was that you connect these four places and you can always connect Delhi and Mumbai and Chennai and Kolkata, and this will create an all India channel. You know, that was the idea, that you develop these places. तो एक आपके
राउटर्स बने रहेंगे और एक आपके ऐसे कनेक्टेड रहेंगे. So that will mean that you are connecting all over India by making some great national highways throughout. This was phase 1. Gradually it developed, we reached till phase 7. Now we have converted everything in Bharatmala. I'll tell you the story there also, why did we do that. But just to give you an idea, since we talked about the total road network and so on, if I look at the numbers today, by 2023, I have data till December 23. By 2023, this number has now become 57 lakh kilometers. So it's a 4-time increase in total road network of India, so around 57 lakh kilometers. And this number has now become 1.54 lakh kilometers. So the national highways have now become more than 1.5 lakh kilometers, and this is now 57 lakh kilometers. So there has been huge improvement when it comes to road development in India. In fact, and in the last 10 years, we have constructed more than 55,000 kilometers of national highway. Last 10 years. Even though last couple of years have been slow, because the financing has been weak. More importantly, new projects are not being developed so soon. Post-COVID pandemic, there has been supply chain disruption. But there has been huge progress when it comes to road development in India, especially national highways and bigger roads. Like say port connectivity or connectivity to the village, like Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. Again, major connectivity is developed all over India. All right, so road is one sector where we have actually done pretty well in the last 20-25 years, and that becomes evident by this. So this is one thing across. मैं आपको एक simple example देता हूँ. My village is almost 260 kilometers from Patna. So even in my college days, I remember, even when I had come after doing my PhD, I remember very well, 2001 में लौट कर आए, तो गांव में सबके अपने कुल देवता कुल देवी होती है, तो लोग कहते चलो दर्शन करते हैं. तो मुझे जो हालत थी सड़कों की, रास्ते में ही दर्शन हो गए. क्योंकि 260 किलोमीटर की जर्नी कुछ 12.5 घंटे में पूरे होती थी उस समय में, क्योंकि रोड थे ही नहीं, बीच बीच में रोड थे, बाकी खड्डा था. तो बीच में कहीं रोड आ जाता था, फिर आप आगे बढ़ते थे, झूला झूलते, फिर रोड आ गया बीच में, तो अच्छा रोड भी है यहाँ पे, चलो ठीक है, बढ़ रहे हैं. सो इट वाज लाइक दैट, दैट इज हाउ वी वुड मूव. Today, if I talk about, by today I mean even from 10-12 years back, then this Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana started, a National Highway Development Program started, and today it is around 5.5 hours. That I plan my trip to my village like that I land in Patna at around 9 in the morning, take a morning flight at 8, land at Patna airport, 9 बजे वहीं से फिर गाड़ी ले लेता हूँ और अपने गांव चला जाता हूँ. 2-2:30 बजे दिन तक गांव पहुँच जाता हूँ, तो वहीं पे खाना खाता हूँ गांव में. लोगों को पहले ही बता के रखता हूँ मैं आ रहा हूँ, दिन का खाना साथ खाएंगे. तो ये रोड डेवलपमेंट का कमाल होता है. अभी मैं देखता हूँ जैसे दरभंगा एयरपोर्ट भी बना दिए, तो उसके वजह से एयर कनेक्टिविटी बन गई वहाँ तक. आपको बताता हूँ इसका फ़ायदा क्या देखा मैंने. Many people can now live in the village and work in the city, and that is adding to their income without adding to their cost of living. And these are the changes that you would see when your transportation networks develop better. Many new things coming in. जब लोग बाहर निकलते हैं अपने गांव से, अपने सिस्टम से, तो बाहर की दुनिया दिखती है, तो बहुत सारे चेंजेस एक्सेप्ट करने को तैयार हो जाते हैं. जैसे मेरे विलेज में मैं अब देखता हूँ that there are young girls who are wearing jeans pant and all. I could not have imagined that 20 years ago, that women in the village will be wearing jeans pant and everything. तो ये बदलाव क्यों है? ये बदलाव इसलिए क्योंकि लोग बाहर निकले, बाहर की दुनिया देखी, बोले अच्छा ठीक है, सब चल ही रहा है, यहाँ भी चल सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है. So the acceptance becomes better. Now क्यों मैंने women और जीन्स पैंट की बात की? बात जीन्स पहनने की नहीं है, बात अपने मर्जी से वो पहन पाने की है जो मेरी इच्छा है. The freedom to do that. The question is not that whether somebody is wearing a jeans or somebody is wearing a skirt. The question is, can I wear what I want to without being scared of being judged? You understand that? So that is what develops a modern mindset, and then the upliftment starts happening. तो जब भी तुम बात करोगे इलेक्ट्रिफिकेशन की, रोड डेवलपमेंट की, जो चर्चा हम लोग इंक्लूसिव ग्रोथ में कर चुके हैं, that it has to be a combination of efficiency and inclusion. Infrastructure development gives you efficiency. Infrastructure development gives you
inclusion. Always plan your answers in that manner. Okay. Then you write below that, however, road development became very slow after 2008 till 2014 due to following challenges. And you write 1, lack of timely clearance regarding land, environment, etc. लैंड एनवायरनमेंट एक्सेट्रा, ये वही कहानी तुम्हें सुना रहा हूं जो एक बार पहले पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सुना चुका हूं. When we were discussing public-private partnership, same issues were there which were delaying the projects and creating losses for the private sector in PPP. Same issues I'm discussing with you. If you could recall, you will get the answers there. Second, lack of timely funding of the project. Again, if you recall, viability gap funding story. So till we did not introduce viability gap funding, trouble was there. जब viability gap funding लाए तो मामला थोड़ा ठीक हुआ, but till we did not introduce viability gap funding, there was problem. Then you write third, cartelization among contractors resulted in hiking the cost. This was often seen because there will be 3-4 contractors for any project and they will come together and they will make sure that they're pushing the prices up, and then you couldn't do much because they were your only choice. Competition नहीं था sector में. And fourth, poor designing of the project created delays. Poor designing of the project created delays. I'll tell you what is poor designing. You make an an underpass where it is not needed. You make a flyover where it is not needed. And why do you make it? You don't make it because you made a mistake. You make it because you knew that the higher the cost of road, higher will be the commission of the contractor. तो ये तरीके थे पैसे बनाने के सरकार से. तो ये चीज़ें चलती थी खूब. और पॉलिटिकल क्लास अपने लेवल पे था, जैसे मैं आपको शायद पहले भी कह चुका हूँगा, उस समय में एक जोक बन गया था दैट यू कांट गेट अ रोड सेक्टर अवॉर्डेड अनलेस यू हैव नॉट पेड द जयंती टैक्स. Jayanti Natarajan ji was the environment minister in UPA 2, and unless you didn't pay the bribe, she won't pass your project. There will be one issue after another raised, and when you paid the bribe, your project was passed. So the hidden circles were that Jayanti tax dijiye to aapka project pass hoga. So you pay that tax and you go ahead. So it was a very commonly heard thing that you have to pay a Jayanti tax. So this was the challenge again, which was delaying the road projects. You change the paragraph and write, in 2015, government introduced an umbrella program. Umbrella program is one program which covers everything in it. That is called an umbrella program. एक program जिसके अंदर सभी आ जाएं, तो उसे कहते हैं umbrella program. So an umbrella program covering all road development projects in India
covering all road development projects in India, called Bharatmala. Called Bharatmala. It included, or rather make it includes, it includes development of, now remember I'm using the word development. Development means constructing new roads and upgrading the existing ones, both. When I use the word development, development means constructing new roads, upgrading the existing ones. Both things are called development. So development of, first, you write it as 1, 2, 3, 4. So first, 82,000 kilometers of new national highway, 82,000 kilometers of new national highway, and completion of old projects, completion of old projects, which means that जो पिछले नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स थे उन्हें कंप्लीट करना और नए 82,000 किलोमीटर्स के रोड बनाना. Both these things to be included there. Second, you write to construct 2,000 kilometers of all-weather border roads, all-weather border roads. All-weather border roads means which sustain in any weather condition. That is all-weather border roads which sustain in any weather condition. So all-weather border roads covering entire border region of India. Covering entire border region of India. Then third, you write to construct 44 new economic corridors. To construct 44 new economic corridors. Again, if you would recall, we had talked about economic corridors and industrial corridors when I was teaching you NIMZ, and I said that we join two important cities and develop industrial corridors around that. So 44 such economic corridors have been planned to be developed all over India, out of which around 9 are now already operational. The corridors are operational, like a Delhi-Mumbai industrial corridor, part of it has become functional, or Bengaluru-Chennai industrial corridor, part of it has become functional, so that kind of a thing. So 44 new economic corridors and 25 multimodal logistical parks. 25 multimodal logistical parks. Okay, I'll tell you what that means. When we say multimodal logistical parks क्या है? One place where you have facilities of production, packaging, grading, measurement, and then transportation to all major markets of the country. That is a logistical park. कि एक logistical park होगा जहां production की facility है. आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैं आपको एक लेक्चर दे रहा था तो मैंने कहा था कि चाइना को अगर देखें तो उन्होंने अपनी बड़ी सिटीज डेवलप की हैं ऑन अ प्लग एंड प्ले मॉडल that you come, fit, and start production. So logistical parks will be like that, plug and play, that there will be production units developed, factories and all, there will be packaging, measurement, grading units, there will be connectivity to all major cities and places of the country. That is logistical park. Multi-modal का मतलब क्या हुआ? Possibility of all modes of transportation like railway, roadway, waterway, and airway. That is why multi-modal logistical park. Do I believe we are clear on that? Next, then you write development of 9,700 kilometers of road
development of 9,700 kilometers of road under Northeast Special Area, Northeast Special Area Road Development Program. It's called NESARDP, Northeast Special Area Road Development Program, NESARDP. Then you write next, Char Dham project, Char Dham project connecting major pilgrimages of India. Major pilgrimages of India. Then you write next, Setu, SETU, Setu. Setu Bharatam, BHARATAM. Setu Bharatam Pariyojana, PARIYOJANA. Setu Bharatam Pariyojana, constructing 1,500 bridges, 1,500 bridges and 400 railway overbridge put a slash, roadway overbridge and underbridges. Railway overbridge slash roadway overbridge, like flyovers and railway tunnels connects, and then tunnels and underbridges, underpasses, so and underbridges. For last mile connectivity, for last mile connectivity. I'll tell you what that means. When I use this word, last mile connectivity, you will see that in many places in India, railways or roadways can take you up to a place, and then you have to take a boat to go to the final place. All right, so that requirement of taking a boat is what the government is trying to minimize. That connected through a bridge, connected through a road, or connected through a railway overbridge, and that ways you can make the last mile connectivity. Then और उस प्रोसेस में याद रखना, आप को मैं कुछ चीज़ें पुट करता रहूँगा ग्रुप पे, और उस प्रोसेस में याद रखना, द highest bridge in the world, the railway bridge, inaugurated in JNK, that is something that you should keep in mind always, and the details of it, who is the constructing authority, what kind of expenditure was incurred, what was the time duration in which it was completed. Prelims में कभी कभी इन चीज़ों पे सवाल पुट कर देते हैं. Then you write one more. In the budget of 2023-24, in the budget of 2023-24, government has provisioned rupees 500 crore for development of Parvatmala scheme, to improve connectivity in mountainous regions Okay, remember one thing, this was introduced, the Parvatmala scheme was introduced with the budget of 22-23. And then 23-24, the money was sanctioned for it. All right, so Parvatmala scheme for improving mountainous connectivity by doing what? Will that be by making roads? By ropeways. All right, so you write in that, through the use of ropeways.
All right. Now you take this up. No, I was smiling because once I was in a place called Lausanne. It's in Switzerland. तो वहाँ रोपवे से ले जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, तो बहुत ही सेफ सा दिख रहा था। तो मैं था, मेरे वाइफ थे, तो मैं उनको यही कह रहा था दैट सच अ सेफ थिंग, यू फील नाइस। और हम हिंदी में बात कर रहे थे, रादर हम बांग्ला में बात कर रहे थे, हिंदी में भी नहीं। तो मैं उनको बोल रहा था कि ये सेफ प्लेस है और आसानी से जा रहे हैं हम लोग। पता नहीं क्या समझ आया, जो ऑपरेटर थे उनके, जो हमारे साथ थे, उन्होंने देखा और बोले कि अभी 3 दिन पहले एक खराब एक्सीडेंट हुआ यहाँ। जो पूरी ट्रॉली थी वो नीचे चली गई, जो ऑपरेटर्स हैं वो तो ट्रेंड होते हैं, वो बच गए। जो बाकी लोग थे वो उनकी डेथ हो गई। मैंने उनको बोला, मेरे कहा आप इंडिया आइए, मैं आपको 2-4 अच्छे एडवेंचर कराऊंगा। अपने घर ले जाके गांव में भैंस के आगे नहीं बांधा तो फिर क्या। पता चलेगा। बट एनीवेज, खैर वो डराने की शायद कोशिश कर रहे थे या जो भी। बट व्हाट आई सॉ देयर, व्हाई इट केम टू माय माइंड, because in many places in Germany, many places in Norway, many places in Switzerland, they were actually not constructing a road, they were connecting it via ropeways, and that was more frugal and more eco-friendly in a mountainous region, because you can't always construct a road in a mountainous region. We just saw what happened with the Char Dham project when we saw it in Uttarakhand. So that is the challenge that one can see at any point of time. Yes. It will always, see, anything that you do will create an issue. I mean, nothing is pure. अब घर बनाते हैं, जानवर मारते हैं। आप सोच के देखिए, घर बनाते हैं तो अर्थवर्म मार देते हैं ना, तो ये तो इशू तो रहेंगे। द आइडिया इज दैट इशू वेरी डेंजरस, और इज इट समथिंग दैट कैन एक्चुअली हार्म मी बैडली? एंड सेकेंड इज दैट इशू on a cost benefit analysis, more benefit or more cost? So if I compare a ropeway to constructing a road, then a ropeway comes cheaper and ecologically more friendly. Another aspect is don't connect, but then will that keep the villages inhabitable? That is the other challenge. कि अगर हम कहें कोई ठीक है, कोई कनेक्टिविटी मत दो, तो आपके कुछ दोस्त आते होंगे, शायद तुम भी आते हो, मैं जानता नहीं हूँ, बट हम आपके कुछ दोस्त ज़रूर आते होंगे हिली रीजन्स से, तो आप उनसे पूछिएगा कि कितनी तकलीफ है हिली रीजन्स में नॉर्मल पीने के पानी इकट्ठा करने में। तो जब हम कनेक्टिविटी नहीं देते तो वो तकलीफें शुरू हो जाती हैं। सो दिस इज अ बिग ट्रेड ऑफ दैट यू हैव टू थिंक ऑफ। एजुकेशन को लेकर दिक्कतें हैं। ये प्रपोजल 6 साल पहले उत्तराखंड गवर्नमेंट को एक टीम ऑफ इकोनॉमिस्ट ने दी थी, दैट अगर उत्तराखंड को डेवलप करना है तो वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लग सकती, लेकिन वहाँ पे हॉर्टिकल्चर हो सकता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हायर एजुकेशन सिस्टम, ये डेवलप हो सकते हैं। क्योंकि आइसोलेशन में क्या चीज़ें और डेवलप होंगी, तो यही चीज़ें डेवलप होंगी। तो आप जब ये चीज़ें डेवलप करेंगे, यू आर लेटिंग योर स्टूडेंट्स डू बेटर, यू आर लेटिंग योर इकोनॉमी डू बेटर, एंड यू कैन बिकम अ हाई वैल्यू सिस्टम देन। बट थिंकिंग दैट वी विल डेवलप इट बाय इंडस्ट्रियलाइजिंग, दैट वोंट ईजिली कट थ्रू। इसीलिए तुम सुनोगे, मैंने पहले भी जब मैं ट्रेडिंग पढ़ा रहा था तुम्हें, तो मैंने कहा था कि ईस्टर्न इंडिया को कनेक्ट करना ज़रूरी है टू एशियान, बिकॉज इफ़ यू लुक एट नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, Meghalaya, and so on. So if we can have a trade corridor cutting across Bangladesh and moving through our eastern states, the Seven Sisters, and then connecting it to the mainland India, that can actually bring prosperity to the relatively poorer states like Bihar, Jharkhand, and the relatively less gifted in the sense nature-wise, because hilly regions are always tough places to live in. They are beautiful but tough places to live in. तो वहाँ को फिर कनेक्टिविटी देने के, तो उससे फिर डेवलपमेंट मिलती है। नहीं तो आप सोचिए, उनके न्यूज़ तक नहीं आते हमारे मेन स्ट्रीम में। किसी भी हिली रीजन की बात कर रहा हूँ, हिमाचल में पलटी मार गए नेता लोग तो न्यूज़ बन गया। लेकिन वैसे हिमाचल में 10 और बातें होती हैं जो कभी न्यूज़ में नहीं आती हमारे, बट पीपल हैव अ टफ लाइफ। दैट इज द आइडिया। हाउ टू मेक इट ईजियर? सो क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर बट कीप इट इन एन इको फ्रेंडली वे। And believe me, I've seen mountainous regions in Europe. I've had the luck of traveling through the Andes, or even the Mount, the Kilimanjaro, तो लकी रहा हूँ लाइफ में, खूब घूमा फिर लिया। तो जब मैं देखता हूँ तो अगर वो लोग ये कर सकते हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हर जगह रोड नहीं चलता,
हर जगह रोपवे भी नहीं चलेगा, तो अलग अलग मेथड्स होते हैं, बट यू नीड टू कनेक्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ सिस्टम. ऑल राइट. देन इनफैक्ट हाँ, अमेरिका जैसे डेवलप हो जाओ तो उन्होंने क्या किया है, रॉकीज में टनल बना लिए हैं, तो वो टनल के थ्रू क्रॉस कर लेते हैं. जब भी तुम रॉकी के थ्रू क्रॉस करोगे, जो एल्थुजियन माउंटेन्स है अमेरिका में, तो टनल के थ्रू क्रॉस कर लेते हैं. वेरियस वेज इन विच. हाँ, एक चैलेंज उनका ये ज़रूर नहीं है जो हमारा है मोस्ट ऑफ द केसेस में, दैट हमारे हिमालयन रीजन्स जो हैं वो न्यू फाउंड फोल्ड माउंटेन्स हैं, तो वहाँ पे सॉइल क्वालिटी एंड possibility of a landslide is much more as compared to what those guys have to face. So no doubt about that. All right. Then you write below that benefits of Bharatmala. Benefits of Bharatmala. And you write first point in that it will help in increasing economic activities it will help in increasing economic activities by improving connectivity and promoting business in remote regions. In remote regions. It will also promote tourism. Then you write next, second, it will help in generating employment it will help in generating employment by make it like this, directly by construction and indirectly through business development. Then you write next, it promotes inclusive growth. It promotes inclusive growth because it targets it promotes inclusive growth because it targets connectivity of backward regions of a district with district headquarter and then to national highway I hope you get that. Backward regions of the district with district headquarter, then to national highway. So better connectivity will imply again better opportunities. And then one more you write, it promotes defense and trade
It promotes defense and trade by constructing all weather border roads, all weather border roads, BORDER wala, border roads. All right. Then you give a heading, you write railway development. Railway development. Again, right now I am picking up the story from India after independence, that what are the recent challenges of railway development. We'll focus on India after 91 and what have we observed. And the story about India before independence, we'll do it separately. All right, so you write there, challenges of Indian railways. Challenges of Indian railways. And you write first in that, lack of capacity creation, lack of capacity creation compared to increase in demand. Okay. I'll tell you what I mean by that. When we say capacity creation, it does not only mean new railway lines. Capacity creation also means converting narrow gauge into broad gauge. All right, I can believe you all understand. Narrow gauge is 0.8 meters, broad gauge is 1.6 meters. So converting narrow gauge into broad gauge, the track width that is. Also, it includes converting single line into double line or double line into triple line. It also includes development of metro rail project. So all that is a part of railways capacity enhancement. All right. But if we look at post-independence situation, railways capacity has gone up by around 6 times to 6.5 times, but passenger demand has increased around 16 times. And freight demand, FREIGHT, freight, that is commodity, demand has increased 19 times. So even though railway capacity has increased 6.5 times, but passenger demand and freight demand, passenger demand 16 times, 16, and freight demand 19 times, 19. That means still we are far away from covering what is needed in railways. अब उसका नतीजा क्या होता है? Congestion, delays, and accident. That if there is over congested network, it will delay the process and then there are accidents involved. So that becomes a problem with capacity not as developed as the requirement. I can believe we are clear on that? Okay. Second, you write, poor technological development which is reflected in use of diesel engines on more than 20% of the routes. So I'll tell you what, the Ministry of Railways says that they have electrified 82% routes in India, electrified, that now the electric engines can ply on it. But electrification of 82% route doesn't mean that everywhere electricity-based engines are plying. There are many diesel engines also which are operational. So more than 20% of the routes still have diesel engines plying. And the challenge is not only diesel engines on more than 20% routes, the challenge is many of them are outdated. So there are many diesel engines which are 40 years old, 50 years old, 1970s के मॉडल के बने हुए. तो इनका क्या नतीजा होता है? Older diesel engines mean more fuel consumption, more pollution, and slower speed. So wrong things in that case here. So more fuel consumption, more pollution, and slower speed. So that has been the challenge for railways in that sense.
पुट अ कमा, सो एक ये बात हुई, देन पुट अ कमा, lack of electronic signaling, lack of electronic signaling on majority of the routes, lack of electronic signaling on majority of the routes. इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग तो आप समझते हैं, जहाँ पे आप लाइट्स हैं वो ब्लिंकर करेंगे। मैनुअल सिग्नलिंग उसके अलावा होती है, कोई लालटेन दिखा रहे हैं या झंडा दिखा रहे हैं, वो मैनुअल सिग्नलिंग है। इंटरेस्टिंग बात यह है दैट इंडिया इज नाउ, वी आर कमिटेड दैट बाय 2030 वी विल हैव 100% इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग, दैट मैनुअल सिग्नलिंग्स क्रिएट challenges of discrepancy, there can be mistakes, तो हम ये करेंगे। इंटरेस्टिंग इसलिए है दैट टिल 2018 we did not have even 100% manual signaling on all the signals. तो लोग अपना भगवान का नाम लेके निकलते थे कि चलो ठीक है, दोनों साइड से आप कभी कभी आपको ध्यान होगा जब आप रेलवे, पता नहीं आपने कभी एक्सपीरियंस किया या नहीं, पर आप इंडिया में रेलवे में ये कॉमन बहुत जगह होता था, स्पेशली ईस्टर्न रेलवेज में और हिली रीजन्स में, दोनों प्लेसेस में ये होता है कि आप देखेंगे दैट देयर इज नथिंग इन फ्रंट, नथिंग अराउंड, बट स्टिल योर ट्रेन इज मूविंग वेरी स्लोली, एंड पीपल आर सेइंग इतना स्लो क्यों चला रहे हैं, ये क्या बात हुआ, इतना स्लो वो इसलिए चला रहे होते थे क्योंकि उनको पता नहीं होता था आगे से क्या हो रहा है। सो इन द प्री मोबाइल फोन ईरा इट यूज्ड टू बी एक्चुअली अ वेरी कॉमन सीन टू बी सीन, क्योंकि अब मैनुअल सिग्नल्स भी नहीं है, तो ह्यूमंस भी नहीं है जो मैनुअली सिग्नल करेंगे कि ये ट्रेन निकल गई, तो दोनों ट्रेन जो इंजन ड्राइवर्स हैं उनको अंदाजा लगना होता था कि भाई ऐसे निकले कि दोनों आपस में कोलिशन ना हो, या तो धीरे धीरे जाते थे, कैसे दूर से देख लेंगे तो रुक जाएंगे, कम से कम ब्रेक मारने की नौबत रहेगी। सो वेरेवर देयर वुड बी लाइक दैट द लाइन्स आर चेंजिंग एंड द मैनुअल सिग्नल इज आल्सो मिसिंग, द ट्रेन्स वुड गो स्लो। देन मोबाइल फोन्स ब्रॉट अ डिफरेंस, तो मोबाइल फोन के बाद कम से कम इतना हो गया दैट यू कुड कम्युनिकेट एंड टेल ईच अदर दैट वी आर हियर एंड सो ऑन। बट अब धीरे धीरे विथ मैनुअल सिग्नलिंग ऑन 100% ऑफ द रूट्स, दैट पार्ट इज सेफ नाउ, कि अब 100% ऑफ द रूट इन इंडिया हैव मैनुअल सिग्नल। पर यहाँ तक हम पहुंचे इन 2018, तो उम्मीद है 2030 तक 100% इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग हो जाएगी, बट दैट इज हाउ वी हैव बीन फंक्शनल, दैट इज द आइडिया। ओके, देन डिजिटल इंडिया बनते थे। सो देन नहीं, मैं इसलिए बोलता हूँ ये बातें आपसे कि हमें ये समझना चाहिए दैट वी आर 3-4 डिफरेंट इंडियाज स्टेइंग टुगेदर। सो व्हेन समबडी सेज ये नौकरी चली जाएगी, वो नौकरी चली जाएगी, बहुत सारी नौकरी इंडिया के किसी पार्ट में बची रहेंगी, क्योंकि वहाँ लोगों को उसकी ज़रूरत फिर भी रहेगी, क्योंकि वहाँ डेवलपमेंट उतना नहीं पहुँचा रहेगा, और ये अगले 15-20 साल का होराइजन होगा। नेक्स्ट 15-20 ईयर्स, टाइप ऑफ जॉब्स, टाइप ऑफ लिविंग बिहेवियर, behavioral aptitudes of people, it will take time to change. People will be staying next 15-20 years, then maybe 20 years later there can be some more homogenization, but it won't be homogenized so quickly and so soon. अब सोच के देखिए, there are many people even today who do not use online booking when it comes to, say, tourism. One of them happens to be my elder brother. मैं उसको बोलता भी हूँ कि बड़े शर्म की बात है कि तुम पढ़े लिखे हो तो तुम क्यों जाते हो किसी ट्रैवल एजेंट के पास, सब कुछ बुक करवाते हो, फिर चीज़ें बोलते नहीं मुझे ऑनलाइन पे भरोसा नहीं है, कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं किसके पास जाऊँगा। तो ये हेजिटेंसी रहेगी इंडिया में, ये नॉर्मल है, कि कुछ लोग सोचेंगे नहीं आई एम कंफर्टेबल विद द अदर थिंग्स, आई एम नॉट गोइंग फॉर माई पोर्टल्स एंड एवरीथिंग, गॉड नोज व्हाट हैपेंस। सो दिस इज समथिंग दैट विल टेक टाइम टू चेंज। अब सोचिए पिछले 10 साल से यू हैव थिंग्स like say the e-commerce, and 8-9 years now they're delivering at home, but the mom and pop stores have gone nowhere. जो स्मॉल किराना स्टोर थे आपके अराउंड, उनका कुछ नहीं बिगड़ा, वो वहीं है जहाँ थे, उल्टा 2-4 नए भी खुल गए। वो तो बेरोजगारी का नतीजा है, लेकिन जो चीज़ें देखेंगे आप, इसलिए आपसे बोलता हूँ बिकॉज कभी कभी गलत बातें लोग लिख देते हैं सिंगुलर विजन में, उनको लगता है दैट जो डेवलप्ड स्पेस ऑफ द कंट्री में हो रहा है वो पूरी कंट्री में होगा, बट कंट्री इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू मेनी places or many time periods, and then those time periods will not converge very soon. All right, then you write one more thing in that, and see same point में आप लिखते रहिए, and lack of use of lighter coaches, LIGHTER, lighter coaches, लाइटर का मतलब हल्का भी होता है।
सिर्फ सिर्फ एक दिशा में मत दिमाग ले जाना, ठीक है? तो लैक ऑफ लाइटर कोचेस. अब ये लाइटर कोचेस क्या हैं? दीज लाइटर कोचेस आर दोज विच यूज मोर फाइबर and less steel. So they are lighter coaches. They are almost 40% lighter in weight. And since they are lighter in weight, you can add more bogies, more coaches without compromising the speed. You understand that? So that is the benefit. अभी एक अच्छी बात ये हुई है from 2021 under the Atmanirbhar Bharat program, rail coach factory Rai Bareli and a Spanish firm Talgo, TALGO, they have come into a joint venture to manufacture lighter coaches in India. All right, तो रायबरेली की रेल कोच फैक्ट्री और टैल्गो फर्म, ये दोनों मिलकर लाइटर कोचेस इंडिया में अब बना रहे हैं. सो नाउ टुडे 27% ऑफ टोटल coaches used by Indian Railways are now lighter coaches. All right, so that is the situation we are in at the moment. 27% of total coaches are lighter coaches. I hope we are clear on that. Okay, then you write the third challenge. You write, irrational pricing structure of railways. Irrational pricing structure of railways. Okay, when I say irrational pricing structure, आप एक लाइन लिख लो. The passenger fare in Indian Railways, the passenger fare in Indian Railways is one of the lowest in the world. Passenger fare in Indian Railways is one of the lowest in the world, and freight charges, FREIGHT, freight charges are commodity charges, commodity transfer charges. Freight charges are one of the highest in the world. Again, it is a cross subsidy that we see, that gives subsidy to passengers and charge heavy from the freight. इसका एक बहुत घटिया नतीजा निकला है, आपको मैं बताता हूँ वो. So globally, when you look at bulk traffic, big commodities, bulk commodities, so globally bulk commodities have a ratio of using 70% railway transport and 30% road transport. That is the global ratio. That globally अगर average निकाला जाए, so bulk traffic transports itself through 70% railways and 30% roadways. That is the global thing. But in India, it is 26% railways and 72% roadways. बाकी का 2% waterways से जाता है. All right, but 26% railways and 72% roadways. तो उल्टा ही हो गया ये. What we see globally, India shows the opposite. आप समझ रहे हैं बात यहाँ तक? इसके 3 कारण हैं. There are 3 reasons that India has bulk transportation majorly by roadways than by railways. There are 3 reasons that India has bulk transportation majorly by roadways rather than by railways. Number 1 is what I was making you write, very high freight charges. That is the first thing that we have, that there is a very high freight charge. तो अगर कोई हमसे पूछते हैं why do we prefer more roadway than railway in India for bulk transportation? Number 1, very high freight charge. Number 2, lack of timely delivery through railways. आपने रेलवे पे अपना सामान डाल दिया तो आप प्रार्थना कर सकते हैं उसके बाद कि ये वक्त पे पहुंच जाए. So number 2, lack of timely delivery. With roadways you have it in your control. You can keep calling the driver, you can keep planning it. Railways, it's beyond you. And number 3, open container transportation. अभी भी बहुत सारी चीजें, especially minerals, metals, इनको open container में भेजते हैं. They are not closed containers. तो open container में चोरी हो सकता है,
कभी बारिश हो सकती है, चीज़ें खराब कर सकती हैं. So open container transportation is not safe. And that results in bulk transportation in India happening via roadways than railways. What's the problem with that? अब ये कोई बात नहीं सर, अच्छा तो है. It creates challenge of excessive burden on roads, higher logistical cost. जब आप बल्क में ट्रांसपोर्ट करें तो चीपर क्या है? Railways, because the cost of transportation is low. But we are using roadways. So larger burden on roads, higher logistical cost, and more possibilities of accidents because the trucks get overworked. तो accidents की possibility बढ़ती है roads के ऊपर. So this is the challenge. So we need to shift it. अब Indian Railways ने एक target बनाया है. Indian Railways has said that by 2040 we will change this ratio to 50-50. कि ये जो 26-74 हो गया है, 72 हो गया है, अब 50-50 करेंगे by 2040. That by 2040 we will target that 50% of bulk transport is by railways. But जो लक्षण दिख रहे हैं उसमें होता नहीं दिख रहा. Because ये करने के लिए ज़रूरी है that railway works on its efficiency. But railway has not worked that much. It has worked on its efficiency, but the visibility is not yet there, especially for cargo transportation. Okay. Then you write within that steps taken by the government, steps taken by the government to promote railway development, steps taken by the government to promote railway development. Okay. So we will see this. We talk about steps for railway development. You write first. अच्छा एक बात और ध्यान रखना. ये जो steps लिए गए हैं, they have been taken under National Rail Vikas Policy. All right, that is the policy that the government is running. It's called National Rail Vikas Policy, and most of the steps are under that policy. So you write in that one, government has increased capital expenditure in railways. Government has increased capital expenditure in railways from less than 40,000 crore rupees, of course, in 2018 to 2,55,000 crore in 2025. When I say 25, I mean the financial year 24-25. So 2,55,000 crore in 2025. एक बात वहाँ समझिएगा, पिछले 4 सालों में, in the last 4 years, 22, 23, 24 and 25, the total capital expenditure in railways has been more than 9 lakh crore rupees. You know, that is what we have seen, that total capital expenditure in railways has been more than 9 lakh crore rupees. Then you write next, second point, government has established a railway safety fund. Government has established a railway safety fund of rupees 1 lakh crore, which has also helped in development of indigenously built anti-collision device called Kavach. Indigenously built
anti-collision device, COLLISION, collision device called Kavach, KAVACH. All right. कवच के साथ सारे engines equipped नहीं हैं अभी, but many engines are now equipped with Kavach. So what happens is two trains are coming in the same direction and they are on the same track, then the Kavach is an early warning signal that it tells the drivers that you are on a track of collision, you stop, and that stops them from colliding. If they don't listen, then Kavach also has the equipment that if there is an alternate line, it will shift one of the trains at least on the other line. So that will mean collision can be avoided. So that is the aspect here. Then you write, yes, yes. हाँ नहीं वही बात है, देखो जो चीज़ 2021 में आई है वो देश में इतने सारे ट्रेन हैं, सब में लगाना मुश्किल है, तो टाइम लगेगा इसको लगाने में। पर अच्छी बात है कि एक इंडिजिनसली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी हमने जो डेवलप की है, तो इट इज़ समथिंग दैट कैन वर्क। कुछ ट्रेन कोलिजन्स इंडिया में इसलिए भी होते हैं, अभी जो उड़ीसा का हुआ उसका तो रिपोर्ट मैं नहीं पढ़ पाया हूँ जब ये हुआ था, लेकिन बहुत सारे ट्रेन एक्सीडेंट्स या कुछ तो ज़रूर इसलिए भी होते हैं क्योंकि लोग फिश प्लेट चुरा के ले जाते हैं, तो लाइन जो है वो डिरेल कर देती है ट्रेन को। फिश प्लेट्स होते हैं जो ट्रैक को बांध के रखते हैं, फिश प्लेट चोरी कर लेते हैं क्योंकि वो 50 रुपए किलो बिक जाता है मार्केट में, ठीक है, तो लोग चुरा के उसको भाग गए, तो वो भी मैनेज करना मुश्किल है। इंडियन रेलवेज रन्स ऑन अ borrowed life, but yes, no doubt that accidents, if they are happening, will be unfortunate। और एक दिक्कत और आती है इसमें, when you are hiring people not on the basis of a test or an exam or so on, many people are hired on the basis of recommendation in state railways or state sections. That becomes a challenge sometimes क्योंकि उनकी capability कितनी है वो बहुत ज़्यादा question mark है। कि कुछ लोग अपने फैमिली मेंबर्स को घुसा देते हैं कि तुम भी रेलवे में आ जाओ। ये अपर लेवल पे नहीं हो सकता, मतलब आप लोग सपने मत सजाइएगा, ये लोअर लेवल पे होता है। ग्रुप डी, ग्रुप ई, ग्रुप एफ इन एम्प्लॉइज में डालते हैं, कैसे तुम रेलवे में तुम घुस जाओ, तुम पोर्टर बन जाओ, तुम लाइनमैन बन जाओ एंड सो ऑन, तुम सिग्नल मैन बन जाओ, तो ऐसे करते हैं बहुत ज़्यादा रेलवेज में। दैट इज़ अ चैलेंज ऑल्सो। ओके, देन यू राइट नेक्स्ट, थर्ड, government has established dedicated freight corridor. Government has established dedicated freight corridor. I hope you would recall we had talked about it. Dedicated freight corridor for faster transportation of commodities. Then one more you write, railway budget has been merged with union budget. Railway budget has been merged with union budget from 2018. Again, when I say 2018, I mean 17-18. From 2018, which has resulted in higher capital expenditure in railways and better coordination among different departments of the government, better coordination among different departments of the government with Indian Railway. I'll tell you what I mean by that. There are many departments like Ministry of Steel, Ministry of Coal, Ministry of Power. They are dependent directly on railways for transportation of inputs. So now with railway merged with union budget, it is easier for people to understand how the railways will function and better coordination exists. Railway को union budget से अलग किया गया था in 1926 on Ackworth Committee report. But then that was happening because 72% of total budget of India was on railways. तो इसको अलग किया गया that railway should have a separate budget. Post independence, the system continued, and if you recall in an earlier class I was telling you that populism became dominant
and that resulted in getting railways into huge losses. अभी भी रेलवे का जो ऑपरेटिंग रेशियो है वो 98% है. ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब होता है हाउ मच मनी डू यू स्पेंड टू अर्न 100 rupees. So 98% is railways operating ratio. In the numerator you take amount of money spent, in the denominator you take revenue of 100 rupees. So how much money do you spend to earn 100 rupees? That is operating ratio. In Indian Railways, it is 98%. Ab socho, if I am spending 98 rupees to earn 100 rupees, where will I have the money for modernization, for technical upgradation, safety purposes? So this is the challenge of Indian Railways. In fact, last year CAG report had said, last year, 22, CAG report had said that the railways operating ratio has become more than 100%. कि 100 रुपया कमाने के लिए 100 से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं. So that is why reforms in railways are very important, that we work on that. Then you write next. Government has rationalized number of departments Earlier there were 8 departments. Now the government has made it 4 for better streamlining. So number of departments and number of directors. Again, earlier there were 16. Now they have made it 8. So number of directors for better focus and accountability. Then you write next. More than 80% of the routes, 80% of the routes have been electrified. Next, you write more than 70% of bogies are are now equipped with bio toilets. Bio toilets have 2 benefits. One, they remove open defecation. There is no possibility of open defecation if there is bio toilet. And 2, they save water quite a lot. That is why bio toilets become important. And again, 73% of railway bogies now have been fit with bio toilets. And then you write one more. Government has introduced semi-high speed rail, the Vande Bharat trains as we call them, semi-high speed rail, and allowed private sector to operate them on some of the routes. तो ये एक प्राइवेटाइजेशन है रेलवे का, बट एक बात समझिएगा, ये प्राइवेटाइजेशन से ज़्यादा मोनेटाइजेशन है. द रूट्स विल बिलोंग टू द गवर्नमेंट एंड सो ऑन, बट द ट्रेन्स कैन बी ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर कैन फिक्स इट्स ओन चार्जेस एंड प्राइस. इसमें एक बात का और ध्यान रखोगे, यू राइट इन दैट सेम थिंग, भारत गर्व ट्रेन्स have been initiated to connect important tourist spots with private sector
contribution, the first Bharat Garv train, मैं वही इमेजिन करता हूं कोई एक गिरा लुढ़कता हुआ इधर आ रहा है. The first Bharat Garv train has become operational, has become operational. हंसना इसलिए किसी ने कुर्सी खिसकाई, आप 4-5 लोग डर के देखे, सच में गिरा क्या कोई? Anyways, right, has become operational between Coimbatore and Shirdi. Between Coimbatore and Shirdi. Remember, there is a second Bharat Garv train planned on the Ramayan route, as they are calling it, but that has not yet become operational. The operational Bharat Garv train is Coimbatore and Shirdi. Keep that in mind. All right. मत गिरो, रुक जाओ. आपका एक टॉपिक में जानबूझ के अभी रोक रहा हूं. मैं 15 मिनट चाहिए, मैं खत्म कर सकता हूं, बट आई हैव अ हैबिट दैट व्हेन आई एंटर अ क्लास आई गॉट टू टीच समथिंग. तो कल हम लोग अराउंड 2:45 मिल लेंगे. आई नीड 15 मिनट्स टू फिनिश इट एंड देन वी विल गो अहेड एंड डू थिंग्स. यस, वही छोड़ रहा हूं, ठीक है. सो यू जस्ट गिव अ हेडिंग, यू राइट पोर्ट डेवलपमेंट इन इंडिया. Port development in India. So I'll take 15 minutes tomorrow, we'll finish it, and 3 o'clock onwards again we can have our nice celebration. Try coming tomorrow. अब मैं जानता हूँ शायद कुछ लोग प्लान कर रहे होंगे कल ही घर निकल जाने का, फिर भी अगर आ सकते हो तो ज़रूर आना. We will all have a nice time. So I'll see you all tomorrow then. Thank you. We'll do that. I'm deliberately leaving it. Let's do it post prelims. That will be a better idea. Chill out. Okay, I'll see you then. Thank you. Thank you people online. I see you tomorrow 2:45 then. God bless you. God bless you. Bye bye Divyanshi. See you tomorrow. कब है? अभी तक मतलब 8 मार्च आया नहीं है डेट. ऑनलाइन आईएएस वाला करवा लीजिए. हाँ वो हो जाएगा. छोड़ दो बिल्कुल. हाँ मत आओ, बिल्कुल हो चुका है. तुम देखोगे सब रिपीट होता रहेगा. ठीक है. थैंक यू वृंदा. बाय बाय. थैंक यू वंशिका. थैंक यू हिमांशु. गॉड ब्लेस यू. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू पीयूष फॉर सेइंग इट. थैंक्स अ लॉट. थैंक्स अ लॉट. गॉड ब्लेस यू. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू अभिनव. थैंक यू अनुभव. हाँ बिल्कुल लाइव होगी शुभी. I'll call you all. Thank you Simran. Bye bye. Bye बेटा. Bye bye. मेरा डेट ऑफ बर्थ 6/11/3 है. हाँ. मैं इस बार का बीपीएससी का फॉर्म भर सकता हूँ? हाँ भर सकते हो. इस बार वाला भर सकते हो. 6/11/3 है. चेक करके बताता हूँ कल. बाय करण. थैंक यू खुशी. ठीक है. बाय बाय. थैंक यू भार्गवी. लाइव टेलीकास्ट करेंगे शुभी तुम लोगों के लिए. थैंक यू गोल्डी. Bye Vrinda. Thank you Dimple. Thank you Parv. Thanks a lot Bhargavi. Bye bye Aarti. मोहित मैं बिहार आऊंगा तो मिलेंगे फिर हम लोग. Thank you Divyanshi. God bless you. So thank you all online. Bye bye Bhumika. I'll see you all tomorrow at 2:45 then. Thank you.